Greetings to all our brothers and sisters world over, those are joining us from the different countries, from the different continents, in the different time zones. We extend you a very warm welcome. What a pleasure to have you on a Sunday morning with us. It's indeed a great pleasure that today we have got a golden triangle. We have got three legends. We have got three honorable vice chancellors. Those are joining us this morning. And I think the entire universe, ब्रह्मांड में आज एक नए तरीके की ध्वनि होने वाली है क्योंकि जब तीन योद्धा इकट्ठे हों और तीन महानुभाव इकट्ठे हों और उनके विचार समक्ष सारे संसार के आए. So world over, people, those are joining us. I'm grateful to Professor Handa, Professor Dubey, Professor Jha, and Professor Bagga. Those are joining us from Australia. I'm thankful to Dr. Sethi, who is joining us from New Zealand. I'm also thankful to people those are joining us from South Korea, people those are joining us from Taiwan, people those are joining us from ASEAN countries. नरेश जी आपका पांडे साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है म्यांमार से. प्रोफेसर नरूला फ्रॉम थाईलैंड, दातो रमेश कोडामल जी फ्रॉम मलेशिया, संदीप मजूमदार जी फ्रॉम कंबोडिया. We extend a very hearty welcome to all of you this morning. Besides that, we are having lots of professors and teachers and principals joining us from the Middle East. I also extend a very hearty welcome people from Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. We extend you a very hearty welcome. We also extend a warm welcome to people those are joining us from Bhutan, from Thimphu and Paro. And we extend a very warm welcome to people those are joining us from Pokhara and those are joining us from Kathmandu. We extend a very hearty welcome to you from Nepal. People those are joining us from Malé, from the Maldives. We extend a very hearty welcome. Those are joining us from Dr. Ali, the Honorable Education Minister's Office. We extend you a very hearty welcome. People those are joining us from Sri Lanka, great welcome to you. I also got a call this morning, people those are joining us from Port Louis, Mauritius. We also extend a hearty welcome to Dr. Bhatnagar from Seychelles. We extend a very warm welcome. It's early morning, so you take your own time. By the time you get up, I know you sent a message to me, but I think it's quite early and it's quite cold as far as London and Southall is concerned. So Lord Tarsim ji, Amrik Singh ji, we would be waiting for you to join in a little while. और अब मैं सारे संसार का भ्रमण करके भारत में वापस आता हूँ उस देवभूमि में, उस रणभूमि में, उस पवित्र भूमि में जो वेदों की भूमि है. और we extend a very hearty welcome this morning to Dr. Anamik Shah Sahab, the Honorable Vice Chancellor, Gujarat Vidyapeeth from Ahmedabad. We extend a very hearty welcome to Dr. Upendra Dharji, the Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishnava Vidyapeeth, Vishwavidyalaya, Indore, Madhya Pradesh, and Professor Ajay Kumar Singh Ji, the Honorable Vice Chancellor, Shri Shri University from Cuttack, from Odisha in India. Ladies and gentlemen, I'll flip through a few of the slides initially because some of them, those are joining from different countries. You wish to know what exactly is the program and how we are going ahead and what exactly is happening today, the whole day. You will be happy to know it's a part of the Guinness Book of Records because this program is from 9:30 a.m. to 9:30 p.m., 12 hours. And that is basically, we are talking about education, empowerment, skills, competencies, and what all is needed in the education ecosystem. As we all are aware of, that the new education policy has been launched by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, along with Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, the Education Minister of India, and all the stakeholders, those we have got. We started our morning at 9:30 this morning from Professor Satyendra Dhiman, Woodbury University, Burbank, California, Vidya se Adhyatam Vidya ki aur, and that was 1.5 hours where he talked about Srimad Bhagavad Gita and he talked about 10 principal main Upanishad
Adi Shankaracharya. After this particular program, the one which is now on after Honorable Vice Chancellor's address sharing their views, we will be going to Dr. Tulika Mehta, who is an IT expert and she's owner and founder of the Kaizen system. She's bringing 5 stakeholders from world over. Those will be talking to us on the new ways of social marketing, media marketing through the IT, basically for school education, higher education, technical education, and vocational education. Thereafter, at 3 o'clock, we will be taking you to Myanmar, Cambodia, Laos, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, and Brunei. And there will be a Professor Pantrip Sri Narulaji from Thailand, Dato Ramesh Kodamalji from Malaysia, Sandeep Majumdarji from Cambodia, and a couple of other dignitaries. They'll be joining us, and there'll be a separate deliberation on India-ASEAN relationship, and that is educational partnership, skill partnership, research and innovation partnership, cultural partnership, and also over there we will talk about that in future how we can have higher education linkages with ASEAN, and there'll be a special focus and special reference on the 8 beautiful states of India that is called the Northeast India, to which the Honorable Prime Minister of India calls Ashtalakshmi. Thereafter, ladies and gentlemen, at 5 o'clock, we will be talking about micro, small, and the medium enterprise. Rabindranath Ji, the chairman of the MSME, Micro, Small, and Medium Enterprise, he is immediate past chairman and MD of the NSIC. He is going to talk about incubation centers, Atal Tinkering Lab, and finishing labs. That is your soft skills and life skill labs, which has to come in the educational institution. Along with him, we'll have 2 more dignitaries. So MSME, startups, stand-ups, make in India, assemble in India, micro, small, and medium enterprise, we will take up at 5 p.m. And ladies and gentlemen, thereafter, we will be going all the way to Dr. Shyam Shuklaji, the Honorable Professor of Analytical Chemistry from the Lamar University, United States, Houston, Texas, who will be talking to us on environment protection, waste management, water management therapies, what India should do, because Bangalore, Chennai, state of Punjab, they're going to have acute shortages and difficulties in the near future as far as water management, and what can be done in schools, what can be done in colleges, what can be in universities with regard to education related to environment protection, waste management, and water management. That we are going to have from 8 o'clock to 9:30. And thereafter, we will be closing with the vote of thanks today. Now, what exactly is ICSI and why we are here, who we are, and why we are deliberating? Ladies and gentlemen, I wish to share with all of you, having come from the armed forces, I was the first Indian Army officer. Having done my master's and PhD in service industry, I moved on deputation to the Ministry of Tourism, Government of India, and we set up the first institute for tourism and travel for the Ministry of Tourism, Government of India, and drafted the whole MBA tourism curriculum way back in 1988. And during that particular time of the Ministry of Tourism, a lot of people were coming from overseas, from abroad. They used to come to the Ministry of Tourism in the Transport Bhavan. And during interaction, we used to feel that there's some kind of a vacuum, that these non-resident Indians want to give something, but they do not know whom to give, how to give, which way to give, what they can share, who can recognize. Because after a particular age, you need recognition, because you give your entire life for a particular cause. So in 1994, there was a birth and the confluence of the non-resident Indian from world over. Slowly and gradually, the 9 years passed, and in 2003, the Honorable then the Prime Minister of India, late Shri Atal Bihari Vajpayee ji, when he came to know
that there is a platform and there is an organization which is getting these NRIs together, and a request was sent across to the Honorable Prime Minister's residence. And that time we got a small time. There were Ministry of External Affairs, Government of India officials. There were a couple of ambassadors from overseas together, and there was a small presentation which was made. Honorable Prime Minister late Atal Bihari Vajpayee ji was a visionary. He said, when do you celebrate this confluence of your NRIs, so-called Punjabi Parvasi Divas? So it was conveyed to him 13th of January. And he asked why. And it was told, sir, there is a Lohri festival which is being celebrated in the northern part of India. So in Haryana, in Punjab, in Himachal, and all the adjacent areas, people celebrate Lohri. He said, okay, great. And how many people are coming approximately? We said, sir, they come in the ratio between 6,000 to 20,000. He said, great. And after a pause of 1 minute, he told, let us give a birth to Bhartiya Parvasi Divas. And then he told, what is the date you told? 13th of January. Okay. He told, let's have Bhartiya Parvasi Divas on 9th of January. And we all looked towards each other. He said that Mahatma Gandhi ji came on 9th of January from South Africa to India to give a call for India's freedom. Who would be a better NRI than Mahatma Gandhi ji? And ladies and gentlemen, 2003 was the birth of Bhartiya Parvasi Divas. In this long journey, I just wish to share that now also next year, 9th of January, virtual summit, already our deliberations, discussions, everything is on. It's great time world over with all the non-resident Indians, and we all are having our program which we are taking care of. And I wish to share with all of us that now instead of 30 million, there are 31 million non-resident Indians world over. During this pandemic, our total focus is making education relevant. Like doctors, nurses, paramedical people, they're great warriors. Similar way, our teachers, our educators, our principals, our vice chancellors, our directors, our technocrats, they are great warriors because they have overcome this particular difficulty and they have established the new norms for imparting and sharing the knowledge, wisdom, and whatsoever curriculum is required. So education, skills, technology, and creativity in the new education policy when we are talking about. Now, there's a big push for technology-based education in future. I was just talking to a couple of people in ASEAN, and they were telling, hey, why don't we set up some kind of online and digital programs with India, with Singapore, and a couple of other countries? I said, good idea. Heartiest congratulations to the new policy in India, having given on 29th of July. From STEM, we have come to STEAM because the entire universe is based on arts. And when we talk about art, it's a heritage, it's our civilization, ये हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी values, हमारी ethos, and हमारी ethics. I wish to share with all of you. You will be happy to know. And if I share something very interesting, ICSI is going to be applying to World Book of Guinness Book of Records, because during this pandemic, ICSI will be the first organization. It will be completing 500 webinars related to education empowerment during this pandemic. It may be a challenge, but it was a great opportunity, ladies and gentlemen. And we are doing a hand holding. I'll share with you. We are organizing 25 webinars per week. And you relate any theme, any matter, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 days. We are with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And nowadays,
We started with health sector, we came to wellness sector, we came to entrepreneurship sector. Nowadays, we are with the media entertainment sector skill council. There are 37 sector skill council in India for the benefit of my all brothers and sisters, those are watching from overseas. Then Friday from Singapore, we have got a live telecast on water management strategies. Saturday, 5 p.m., Swami Vivekanand for Education and Youth Empowerment from Chicago. Sunday morning, Srimad Bhagavad Gita and India's main principal Upanishad, 9:30, every Sunday, all the way live from United States. 3 o'clock, ASEAN. 5 p.m., MSME. Saturday evening, with the Ministry of Ayush, we started yoga, meditation, naturopathy, and your mental wellness, your physical wellness. Stay positive, dream positive, think positive, talk positive, and you will be happy to know for the last 7 months, I'm growing my own organic vegetable on my rooftop, and I'm taking only that particular food. And every Saturday and Sunday at 8 p.m. in the evening with the non-resident Indians, we have got a panel discussion or one-to-one discussion how NRIs can support the new education policy 2020 in India. Then there was a request. Your all programs are in English. Why don't you have a program in Hindi? Because there are a couple of states and couple of people where I said we made a request. We have got a lot of Spanish people, German people, French people, Dutch people. Those are joining us. And ASEAN also, there are different languages and all. They told fine, but there are 400 million plus youth and teachers जो हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं, तो उनके लिए भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए. तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि रोजाना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हमारे एक मोटिवेशनल टॉक का आज का युवा क्या चाहता है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटे का कार्यक्रम हिंदी में. और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे स्पेशल वेबिनार 5 प्रिंसिपल रोज आते हैं और वो मेंटल मैराथन करते हैं और डिस्कशन और डेलिब्रेशन करते हैं जहां वो बातचीत करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में अब पॉलिसी तो आ गई, अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और वो सब रिसर्च बेस्ड कैसे आएगा. यूथ एम्पावरमेंट इज फोकस, टीचर एम्पावरमेंट इज फोकस, and with that education got to be relevant to my day to day life. बच्चा पॉलिटेक्निक में प्रोग्राम कर रहा है किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक का, वो इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कर रहा है और डिप्लोमे का सर्टिफिकेट भी मिल गया. और उसके बाद उनके घर की लाइट खराब हो गई और वो फोन उठा रहा है कि अंकल मैं सतनाम सिंह बोल रहा हूँ, आप मलकीत सिंह अंकल बोल रहे हो? हाँ अंकल, हमारे घर की लाइट खराब हो गई, जरा ठीक करोगे? तो उस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का क्या फायदा है? दैट इज ऑफ नो यूज. We got to bring education in our day-to-day life. That's what is the concern. इस पूरे पैंडेमिक के अंदर 25 मार्च से लेकर 152 कंट्रीज का हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में एक बहुत स्टडी करवाया और जिसके अंदर से ये निकल के आया कि द नेक्स्ट क्राइसिस वर्ल्ड ओवर इज गोइंग टू बी ऑन वाटर क्राइसिस. Whether we like it or not, whether we believe it or not, ladies and gentlemen, every drop of the water is going to be so precious. The world will pass through such a misunderstanding if we do not take care of every drop of water. So that is also, ये कहाँ से शुरू होगा? हमारे घर से. Women empowerment is very important. घर से कहाँ आएगा? स्कूल से. स्कूल से कहाँ आएगा? कॉलेज से. कॉलेज से कहाँ आएगा? यूनिवर्सिटी से. यूनिवर्सिटी से कहाँ जाएगा? जहां पर मेरा रोजगार होगा. We got to take care of it in the ecosystem. Organic farming. बहुत सारी डेलिब्रेशन के बाद ये पता लगा बच्चे स्टार्टअप तो कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का या एग्रीकल्चर रिलेटेड का जो बेसिक मूल है जीवन का उसमें स्टार्टअप नहीं आ रहे हैं ज्यादा. तो क्यों नहीं आ रहे हैं? सो दिस इज ऑल्सो ए रिक्वेस्ट वी वुड लाइक टू मेक. ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमको लेना है. हेल्थ एंड वेलनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी गॉट टू टेक केयर ऑफ. अपनी सेहत का ख्याल रखिए. अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप संसार को कुछ दे सकते हैं और कर सकते हैं. Then startup, entrepreneurship and MSME. This is something very important. We'll be deliberating about it. Music. इसके ऊपर भी हमारा चेंबर बहुत रिसर्च कर रहा है वर्ल्ड ओवर. मुझे जर्मनी से इनपुट मिल रहे हैं.
ऑस्ट्रिया से इनपुट मिल रहे हैं, फ्रांस से इनपुट मिल रहे हैं, भारत के बहुत सारे राज्यों से इनपुट मिल रहे हैं, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि म्यूजिक should be an integral part of the entire education ecosystem. ये स्ट्रेस बस्टर है, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा यदि आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं. Our chamber is in your service. Any school, any college, any university, any institution, any polytechnic, any ITI, should you wish to share something with us 12 hours every day, अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप हैरान हो जाएंगे. अर्ली मॉर्निंग, हम सुबह जब भारत में 5 बजते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी के साथ शुरू करते हुए मंगोलिया तक जाते हैं. मंगोलिया में भी टीचर एम्पावरमेंट का और कैपेसिटी बिल्डिंग और हैंड होल्डिंग का सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. हम हर कोई ना कोई सेवा दे सकता है, जिसके पास जो कुछ भी है उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. और रात का जो आखिरी का कार्यक्रम होता है वो हमारा स्पेनिश पॉपुलेशन, जो स्पेनिश भाषा है, हम लैटिन अमेरिका तक जाते हैं, मैक्सिको, पेरू, कोस्टारिका, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, वहां पर रात का कार्यक्रम रहता है. हमारे चेंबर ने एनआरआईज के साथ मिलकर भारत के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया, एंड वी आर वेरी हैप्पी. अगर आप एआईसीटी की वेबसाइट देखेंगे तो आपको होम पेज पर मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिनिशिंग स्कूल. उसके इनपुट हमने मिनिस्ट्री ऑफ, जो पहले एचआरडी था और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, एक भारत में पॉलिसी बनी थी रूसा की, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके अंदर हमने एक इनपुट दिया था फिनिशिंग स्कूल का. और फिनिशिंग स्कूल में हमने सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल की बातचीत की थी, और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि एआईसीटी ने उसको 100% अडॉप्ट किया. और एआईसीटी के होम पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको फिनिशिंग स्कूल वर्ड दिखाई देगा. दैट इज समथिंग रिमार्केबल. और ये फिनिशिंग स्कूल सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल के लिए है. देन whatever is the situation in life, we all got to understand it is very, very important for all of us, ladies and gentlemen. Whatever is the situation, we got to just go with the flow. We have to understand. Nowadays, we are with the Media Entertainment Skill Council. As we made a mention to you, radio, television, theater, music, films, animation, augmented reality, artificial intelligence, everything we are bringing to all of you together. मनमोहन जी, जो पहले यश चोपड़ा जी के साथ हुआ करते थे, लेट यश चोपड़ा जी, इनको हम स्विट्जरलैंड लेकर गए और वहां पर एक नया रूप हुआ. नॉन रेजिडेंट इंडियन भारत के साथ हमारे फिल्मों के माध्यम से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं, भारत के संगीत के साथ, इमोशंस के साथ, सब चीजों के साथ जुड़े हुए हैं. और ये शख्स हमारे चेयरमैन हैं, जो सिनेमेटोग्राफर होते थे यश चोपड़ा जी के साथ, ये आजकल फिल्म डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं मनमोहन सिंह जी. इनके माध्यम से ये देखिए कि कनाडा में हमारी कुछ शूटिंग्स चल रही थी, उसके साथ हमने सारे का सारा प्रयास किया सब चीजों को लेकर चले. तो ladies and gentlemen, we extend today and we proceed with the program. We have got 3 distinguished honorable vice chancellors with us today, and they have joined us. The entire program I've already discussed with you. These are the complete highlights which I shared, and we will be taking the entire vision. This is 3 o'clock program when we are taking you to ASEAN. This is the 5 p.m. program when we will be talking about MSME. This is the evening program, what we will be talking from Houston, that is all the way from the Texas, and that is Dr. Shyam S. Shukla ji with us. ये हमारे चेंबर की रिसर्च है पिछले 6 महीने की, तकरीबन 160 कंट्रीज के कॉन्फ्लुएंस से. B2B, what was known earlier as business to business, इसका नया नाम है बैक टू बेसिक्स. बैक टू बेसिक्स, जीवन में बेसिक्स पर वापस आएंगे तो सब कुछ बच जाएगा. बेसिक भोजन, बेसिक स्वास्थ्य और बेसिक शिक्षा. Sustainable development for the entire world, which we have to take care of. Our chamber thought process is whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. So ladies and gentlemen, with these words, let me extend a very hearty welcome and pleasure, because हमारे पास 3 महानुभाव
हमारे 3 योद्धा और हमारे 3 शास्त्रों के साथ जुड़े हुए और भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हुए 3 विद्वान हमारे साथ आज हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। एंड आई वुड लाइक टू बी at the age of 72 a very humble student this morning to learn whatsoever I can pick up from them। और जितने लोग वर्ल्ड से जुड़े हैं, I know, let's learn from each other, let's share the knowledge, let's share the wisdom, और एक ऐसी कढ़ाई बनाएं, एक ऐसा पॉडलॉक बनाएं जिसके अंदर सारा विजडम, सारी नॉलेज इकट्ठी हो और उसको पूरे विश्व के कल्याण और शांति के लिए हम इस्तेमाल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब देखिए, डॉक्टर अनामिक शाह साहब ने मुझे अपना स्वरूप दिखा दिया, क्योंकि पहले नहीं थे और मैं इनका इंतजार कर रहा था। अब डॉक्टर उपेंद्र धर साहब, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर उपेंद्र धर जी से निवेदन करूंगा कि लेट हिम शेयर हिज थॉट प्रोसेस। सर, मैंने बहुत समय लिया, लेकिन आप भी अपना समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आजकल डिजिटल लंच है, अगला कार्यक्रम डिले हो सकता है, लेकिन हम सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन करें। विद्या से अध्यात्म में कहा जा रहे हैं, व्हाट कैन यूनिवर्सिटीज डू टू ब्रिज द स्किल गैप्स एंड द रोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हम आगे लेके चलें और उस दिशा में वापस जाएं। और वैसे तो मैं गालियां निकालता हूं मैकॉले को बहुत ज्यादा, जितनी गालियां निकालो उतनी कम है। उसने हमारी शिक्षा प्रणाली का भट्टा बैठा दिया सब चीजों का। भगवान उसकी आत्मा को कभी शांति ना दे, पर फिर भी एक अच्छा इंसान होने के नाते उसको इतनी सी ही बद्दुआ देकर वहीं छोड़ देते हैं और हम अपने कल्याण के लिए आगे चलते हैं। बिकॉज 15वीं शताब्दी तक ना तो कोई भारत में भिखारी था और ना ही कोई बेरोजगार था। And let's get back to that entrepreneurship and skill development and what could be the role of the universities. With these words, Dr. Upendra Dharji, the Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishno Vidyapeeth, Vishwavidyalaya, Indore, Madhya Pradesh. सर अनम्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिएगा सर माइक को। आ गया। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, प्रणाम आपको। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलशन शर्मा जी। आपको मैं बधाई भी देना चाहूंगा फॉर डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर द गुड ऑफ whole mankind, I would say, not only our country, but it's for the mankind that you are doing. Respected Dr. Anamik Shah, Dr. Ajay Singh ji, all the eminent people who are associated with this program, good morning to all of you, Indian time. As Dr. Gulshan Shah rightly mentioned, that national education policy was declared on 29th of July this year, 2020. And this policy has come after 34 years. ये 34 years, 34 साल के बाद ये policy आई, long awaited, and all of us are very optimistic about its impact. ये माना जाता है कि अगले 15 साल में, in next 15 years, our higher education system will completely change. That is our means in India. कुछ बिंदु चूंकि स्पेसिफिकली ये सेशन स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, तो मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करता हूं। If we look at the 12th 5-year plan, that is 2012 to 2017, उस टाइम एक एस्टिमेशन किया गया था, it was estimated that only a very small percentage of the Indian workforce in the age group of 19 to 24, 19-24 वर्ष की आयु के जो लोग वर्कफोर्स में थे,
they received formal vocational education. That is only 5%. That was only 5% of the total workforce in India. This was the estimate that was reported. If we compare this figure with other countries, say United States, the percentage is 52%. Germany 75%. South Korea as high as 96%, as against only 5% in our country. So vocational education, those who had undergone, when I am saying that vocational education, I am referring to skill-based education. These numbers only underline the urgency of the need to hasten the spread of vocational education in India. This only indicates that why it is important, where we are lagging behind. Only a few years back, estimate says that we had only 5% of the workforce सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। Okay, am I audible? अनम्यूट कर लीजिए, हाँ जी सर, हाँ जी। Yeah. Now it is, yeah. Now it's okay. Okay. So this is an indicator that how urgent it is to look at this skill development, because we are lagging behind. Only a few years back, this estimation was done, which showed only 5% of our workforce who had undergone vocational education. Some of the reasons for this include the fact that vocational education has in the past focused largely on dropouts. See, in the previous years, focus was on dropouts. It was believed perhaps that, well, this vocational education is meant only for those who drop out from the school, who drop out from the formal education. So grade 8 and upwards, and on grades 11 and 12. However, students passed out from grades 11 and 12 with vocational subjects. Those students did not have well-defined pathways to continue with their chosen vocation in higher education. So they found a roadblock. There were students who chose vocational education in the dropout category. But then what? So there was a roadblock. The lack of planning and the poor delivery of vocational education in the past has contributed to the creation of a social status hierarchy in which vocational education is perceived to be inferior to mainstream education, meant largely for students who are unable to cope with the later. So with the result, what happened, since it was focused at the dropouts, school dropouts, the impression that was formed was that, well, it is for those who are not able to cope with the formal education. With the result, a kind of hierarchy developed. That is, vocational education is somewhat inferior. Skill-based education is somewhat inferior to the mainstream education. This kind of impression was formed, and this became the reason for, in a way, not attracting many students to that stream. This is a perception that persists even today and affects the choices students make. It is a serious concern that can only be dealt with by a complete reimagination of how vocational education is offered to students in the future. And that's why I said I started with this, that National Education Policy 2020 gives a lot of hope, because there is a focus in NEP 2020 on vocational education to integrate vocational education with the mainstream education. Now, see, so far, vocational education was treated something different, separately. It was not integrated with mainstream education.
But now onwards, as we are beginning to implement NEP 2020, it will become an integrated part of mainstream education. As per this new NEP 2020, vocational education will be integrated into all educational institutions in a phased manner over the next decade. So next decade, from 2021, say 2021 to 2030, implementation will happen in phased manner. Focus areas will be chosen based on skills gap analysis and mapping of local opportunities, and technical and vocational education will become part of the larger vision of holistic education. This is how our perspective, so far as the skill-based education is concerned, is going to change. So it's a very positive note. Now, further on, corporate social responsibility may be brought in to improve institutional infrastructure. For instance, the telecom centers of excellence, that is TCOEs, established in the IITs, are a joint venture between the Government of India and major technical operators and the premier technical and management institutes of India. The telecom operators provide 90% of the funding to telecom centers of excellence. So on that pattern, now it is expected that joint ventures, collaborative education will happen over the period of time. Now, coming to the second part of this, so therefore, so far as the skill-based education is concerned, universities have a great role to play. Universities, I would say, higher education institutions have a great role to play, and this NEP 2020 has come as a great hope, and we have to be very optimistic about it, and it's going to change the total perspective. Now, coming to the second part of the theme, that is entrepreneurship. Entrepreneurship has been increasingly recognized for its role in creating. Yeah. Again? Yeah, please. Yeah, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ. We'll talk to you later. Yeah. Yeah. Sorry. नहीं करिए सर, करिए. हाँ जी. Yeah. Now, as far as entrepreneurship is concerned, it has been increasingly recognized for its role in creating jobs and economic growth, and in increasing the competitiveness of a region, state, or country. It's also linked with more it is also linked with more personal and social outcomes. For instance, it may unlock personal potential, assist societal interests, and contribute to an increase in wealth for the poor. So it is on record, it has been documented that entrepreneurship can change the complete situation. It unleashes the personal potential of an individual who has entrepreneurial skills, who have entrepreneurial orientation. Especially in times of financial crisis, entrepreneurship is one way to avoid unemployment or work-related frustration, while supporting personal development and offering a means of self-fulfillment. For such growth in entrepreneurship to happen, what universities can do? See, the focus here in our discussion is what universities can do, what HEIs can do, what higher education institutions can do. Students need to have their interest stimulated in entrepreneurial topics, and it rests with government on one hand, and higher education institutions to arouse such interest in awareness. The first thing that universities can do is to arouse the interest of the students
arouse the interest, not only arouse the interest, but also generate awareness, make them more aware about the opportunities which are before them. The influence of education on entrepreneurial success. In a study, it has been reported in United States. If we take the statistics, that a study was done on entrepreneurs, and some of the findings are very interesting. I would like to highlight. One, success in terms of business survival is much higher for those who graduate from high school and go to the college or university. Second, a college or university graduate is likely to achieve 25% greater sales than a high school dropout. Thirdly, someone with a postgraduate degree is likely to achieve 40% greater sales than a high school graduate. Now, here can be a question. Well, there are many examples where people were not high, they were school dropouts, but they emerged to be great entrepreneurs. They generated great wealth for the country. There are exceptions, no doubt. There are certain examples. But then, if we go by the surveys, if we go by the research, if we compare, if we go by the statistics, the success rate is higher when we take the people who have gone through the formal education. That means who have passed through college and university. In our country itself, we can see there are a large number of alumni of IIMs. Say particularly, I will talk about IIM Ahmedabad, who are very successful entrepreneurs. Since I was in few years back, more than a decade back, I was director of Nirma Institute of Management at Ahmedabad. So I had a direct connect with IIM Ahmedabad. So I have direct information, first-hand information about those people who are very successful entrepreneurs. They passed out of IIM. They did not choose working in an organization or working for someone else. They created their own organizations. Furthermore, a study is in 2009. I have seen a study in literature which was conducted in 2009 that high growth businesses created in the United States. The study was again done in the United States over the previous 20 years, 2009, going back, in previous 20 years, determined that 85% were created by college graduates. 85 businesses were created by college graduates. Now coming specifically to what we can do as a university, as HEIs, what we can do. I have identified the three roles for promoting entrepreneurship in the university system or in the higher education system. Number one is developing entrepreneurial teaching and learning practices. This is the first thing. Developing entrepreneurial teachings and learning practices. There is a need to implement entrepreneurial practices, including multidisciplinary educators, experimentation and discovery, innovative pedagogies, experiential approaches, and cross-campus reach. Universities can encourage students by providing entrepreneurial sensitization, education, and training. This is the first part. That is, in university system, in higher education system, we can make efforts, we can take initiatives to develop entrepreneurial teaching and learning practices. Second, engaging stakeholders inside and outside the university. That engagement is very important. If we think that, oh, it is only X or Y who will be doing it, then it will not go forward. Therefore, that engagement of everyone is very important. A university must engage key stakeholders within and outside the university, including academic faculty, even vice chancellors. If people at the top would involve themselves, if they would themselves engage in this kind of effort and
initiative, seriousness will be more. Student clubs need to be created, focused at entrepreneurship, and various societies like this ICSI can be networked in this kind of initiative. These groups act as agents in creating entrepreneurship activities. So there will be continuity. This is not only say first part I said we need to create that, we need to develop the practices. We need to develop the entrepreneurial teaching and learning practices. Second, engagement. Engagement is necessary. Then only the first role will sustain. Otherwise, first role will not sustain. It will go after some time. Thirdly, creating an enabling institutional environment. Enabling institutional environment, that is very important. A key role of universities in entrepreneurship is to create the entrepreneurial ecosystem, which involves visible leadership, clarity of purpose, embedding of an entrepreneurial culture, and capacity building. So if we do that, then it will show great results during the times to come. So finally, I repeat these three roles of the universities: developing entrepreneurial teaching and learning practices. Second, engaging stakeholders inside and outside the university. Thirdly, creating an enabling institutional environment. That is, the ecosystem needs to be created. These are the three major roles I could identify from the literature, and we need to adopt them now. See, so far in Indian context, we have not been doing much in this direction. Though there are very good examples, many examples, as I cited just few minutes back, I cited IIM Ahmedabad. There are very great examples. But then seeing the size of population of the nation, seeing the size of the young population in the country, which must contain, which must remain and sustain as a dividend for the nation. Therefore, these three roles I see for the higher education institutions during the times to come. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. It's indeed such a great pleasure to see you after 1989. Yeah. I mean, it's a long way we have come, and it's indeed great to hear from your side. Ladies and gentlemen, world over, those joined us a little late, I wish to share with all of you, that is Honorable Vice Chancellor Dr. Upendra Dharji from Shri Vaishwa Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. Our two other eminent distinguished panelists and guests are with us, Dr. Anamik Shahaji and Professor Ajay Kumar Singh ji. Both can decide who would like to speak first. I leave it to the wisdom because I'm too humble, and at the same time, can you appreciate it is early morning, 5 a.m. in Switzerland, and we have been joined by Mr. Mr. Balbir, I'll just Chaudhary. see full Chaudhary. name. Just a second. I Can you will. hear me? Baldev Chaudhary. Balbir Chaudhary ji. He's Haan ji. joined us from Switzerland for this particular program. Hearty welcome to you. Pleasure to have you. We are, sir, running little delay. No problem. I want everybody to take their adequate time. And Honorable Union Minister is joining us at 12:45. So I will say a little time I'm taking extra. So Balbir ji, hearty welcome to you. Pleasure to have you with us. He is going to talk us about the IT, social media, and others. Great welcome. Sir, you can enjoy your morning tea and coffee and show it to us in a digital. And meanwhile, we will enjoy two more speakers I have got. So out of now, let Dr. Anamik Shah start. Sir, Professor Ajay Kumar ji, how you can be so kind to the universe? How you can be so kind to the universe? I met you only once earlier as a soldier, and I found so much of warmth, like I know you for years together. You're such a fine person. Last time also when we met. And ladies and gentlemen, let me convey my deep thanks to
Honorable Dr. Upendra Dharji. And let me move now to Dr. Anamik Shahaji, the Honorable Vice Chancellor, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad. And we extend him a very hearty welcome. Pleasure to have him. There's a lot of intake from him. There's so much to learn from him. And I call him not a political guru of mine, but at least a brotherly guru who gives lots of inputs from time to time, how to empower education, what is to be done, which way it is to be done, which way we should move and all that. I keep learning a lot of inspiration from his side. So Honorable Vice Chancellor, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Honorable Professor Dr. Anamik Shahaji. Sir, unmute your mic, sir. Gulshan ji, thank you very much. And I am very much also thankful to Ajay Kumar ji for providing the middle batsman's opportunity. The next couple of minutes, I just want to share a few things with the audience. Let me introduce myself. I represent 3 organizations. The first is the Saurashtra University, where I worked as a professor of medicinal chemistry for 33 years, having 70 PhD students. Out of them, 35 had gone abroad with Erasmus Mundus, Humboldt Fellowship, or even the Oxford Fellowships, and also many other fellowships, and they have worked there in Marie Curie Fellowship. So far as my area at Saurashtra University was to work on anti-HIV molecules, anti-cancer molecules, multi-drug resistance molecules, collaborative applied chemistry, and giving the technology to the small and medium pharma enterprises, as well as the ground level research in antiviral front, also non-nucleose transcriptase inhibitors. But my current assignment is Gujarat Vidyapeeth, and Gujarat Vidyapeeth is the historical place, which was the only university where Mahatma Gandhi was chancellor lifelong. After that, Sardar Patel was chancellor, then Rajendra Prasad ji, and many other. Currently, 11 Bhatt, Magsaysay awardee and known for Self-Employed Women's Association, is our chancellor at the 85. And also I represent as a president last 10 years, Indian Society of Chemists and Biologists, where my predecessor was Professor D.P. Singh, chairman of UGC and former NAC. Anyway, I will start my journey that Saurashtra University Chemistry Department was founded in 1979. And at that time, the facility we have is the Nescafe tin, which we were procuring from market 2 rupees, blank tin, and we were making heating mantles and creating reaction vessels from heating mantles. From that, currently, Saurashtra University has a credit of having Center of Excellence, where all facilities are under one roof, and which is named as National Facility for Drug Discovery for Small and Medium Pharma Enterprises. The journey is very simple. In 1990s, between 2000, UGC funds were almost negligible to the state universities, and state universities were craving for their salary also. So during that period, some multinational companies, they came to Saurashtra University and asked that, can you make certain molecules for us? And we are going to purchase that. At that time, such type of collaboration was impossible in the state university framework, because there were so many hurdles from the administration, from questioning,
on IPR and many other things, but somehow we managed to have 2 collaborations, and this collaboration has fetched us $100 per compound. We have a strength of 50 research scholars at that time with the very simple facility, but we were able to generate several $100, and out of that we built up 2 more research laboratory for our research scholars by students' own money and contribution by these multinational companies to whom we are offering new molecules which they were screening for their pharmaceutical, pesticides and other activities. So this was our first venture as a state university, and it was a very good experience that it has built up a confidence that the university, very small department, can do certain things which can be attractive for the multinational firms. So it was our journey and beginning to have a collaborative work with these companies. The second phase was that Saurashtra is a drought affected area, and Saurashtra University has 300-acre land which was non-cultivable land. But the then Vice Chancellor, we requested him that we can do something on this land. So he has offered us 50-acre land, and in 50-acre land, ultimately we created a medicinal plant garden with the 365 different variety of medicinal plant, and that was known as Inter-University Medicinal Plant Garden for Research, Nurture and Therapeutics. And we have a collaboration with Ruia College. We have a collaboration with several pharmaceutical companies as well as the natural product people, and that was our shared experience where we were able to create medicinal plants, and we cultivated drumsticks, we cultivated aromatic plants, we put up the extraction unit to learn the students how to extract the eucalyptus oil, how to extract neem oil, and the students got experiments on that. And I'm very happy to share that when Professor M.M. Sharma visited our place, and we have shown this homemade or locally fabricated extraction unit, he was so happy to see that. He gave one lecture under the neem tree about the various method of extraction on ground itself, and it was a very happy moment for us. Our journey has in the next phase begin, because then number of companies were coming forward and they came to us that we want to work with Saurashtra University. So on one way, our students have started to go abroad for the doctoral, pre-doctoral and post-doctoral work. On other hand, Saurashtra and Gujarat has a natural benefit of pharmaceutical research and pharmaceutical production and entrepreneurship, which was inherent in the Gujarati people and especially students of Saurashtra region. So what has happened that more and more collaboration had come to us. So in 1990, DuPont and Merck, R.J. Johnson, they came for collaboration. In 1999, Ranbaxy came forward. Then Dabur Research Foundation, Alembic Limited, Piramal Research Center, Claris Life Sciences, and these research collaborations were for anti-tubercular new molecules, anti-cancer molecules, antimicrobial, cancer pharmacology, and process chemistry. And we got several projects from Department of Biotechnology, CSIR, DST, UGC, individual pharma companies, and our students were very much trained. During this period, the students also learned intellectual property right, IPR. And I am very happy to share with you, it was not our regular program, but our students were appearing to the Hyderabad online courses of NIPER
diploma in patent, and out of our several hundred PhD scholars, more than 24 have taken their job in the intellectual property right in the different pharma companies of national and international repute, and they are in India, and they are also in abroad also. These all projects have earned several of money, and we were able to develop the infrastructures. In next phase, we were able to appeal to Department of Science and Technology for their drugs and pharmaceutical research support, and at a stretch, we were able to get 5 crore rupees to have very sophisticated instrument to be established under the program National Facility for Drug Discovery for Small and Medium Pharma Enterprises, where we were able to house several equipments from 10 lakh to 1.5 crore rupees. After 5 years, the government of Gujarat was also very happy about that, and they have sanctioned us additional 13 crore rupees, and with independent donors like Dipchand Gardi, we were able to build 36,000 square feet area in 3-story with all laboratories, analytical laboratories, and whatever required for the small and medium pharma enterprises, all analytical support we have given. We also started postgraduate programs in sophisticated instruments for 1 year, and we trained more than 200 students on equipment, and these students were readily available for plug-in in the small to the big pharma companies, either in QC or in quality assurance or in production or in R&D or in process chemistry. So this transformation was simultaneously done with the changes in our syllabus, introducing dissertation at every level, every post-graduation program, whether it is specialized for pharmaceutical chemistry or whether it is specialized for analytical chemistry or synthetic drug chemistry or physical and polymer chemistry. So this was our journey where we were able to do several things, and I think that more than 2,500 students of post-graduation with different specializations were developed, and they had gone to small, medium, big, national and multinational companies, but simultaneously 50 of them, they have created their own small company to 50 crore, and they are working in the area of intermediate production. They are working in the active pharmaceutical ingredients, extraction of medicinal plant. They are working in the recovery of catalysis. They are working in developing new catalysis from the precious metals and recycling them for the big pharma companies. They are supporting the big pharma companies. So they worked in the diversified field of production, R&D, computational chemistry, computational drug discovery, and they become first generation entrepreneur in a very big number. So this is how what we can see that, and you can see on the website of Saudas University as well as Center of Excellence that what are the facilities at that time created. Now, I also want to show you the negative points of being a state university. Because in state universities, you cannot decide your predecessor or you cannot decide your successor. If you are not able to build up the team or the administration is not going to help you much, then if it becomes the person-centric, then the entire system always is likely to collapse, which has happened in many universities where you have built up wonderful infrastructures and after few years there are no takers. So when we have started our chemistry work, we have two things in our mind. Initially, we didn't have any instruments, sophisticated instruments. So we have made a principle that the facility which is not
available in my laboratory or in my neighborhood, the facility which is created by the rest of the world is my own, and I have to connect with them and collaborate with them. So I can assure you that more than 50 collaborators world over, in Europe, in United States, in Taiwan, in Korea, in many other countries, in Japan, I was able to collaborate with them and doing a wonderful research work in the medicinal chemistry and having a cited papers, more than 200 research papers with the collaborative work. So we have to think about this also, that when facility is not with you, the facility available in the rest of the world and intellect and collaboration in biology, pharmacology, in other area, you can collaborate as a chemist and you can do lots of work. Then and then you can contribute to your country, you can contribute to in your research. The second thing is that there should be a teamwork. Third important thing is that the academic and administration support is very, very essential in universities. If you want to be success, you require a fast change, fast decision, fast execution of money received from the grants, and continue flow of money for doing your things. The another drawback in the Indian education system, and I am very sorry to inform all of you that the new education system, there is no mention of postdoctoral research fellowships and postdoctoral work, unless and until, like United States and European countries, if you are not going to create at least 5 to 10% of postdoctoral fellowship with the highly lucrative offer and with the permanent positions, you are not going to create the right kind of R&D infrastructure. Your entire national education policy will be not successful unless and until in science and technology and in pure fields and pure research and particularly applied research also, you require postdoctoral fellowship. Our CSI laboratories have done excellent well in last 50 years because of many of CSI laboratories has pool officers and systems like postdoctoral fellowship. So it is my appeal to our fellow vice chancellors and others that the government of India should very much concentrate on this issue. If we require a challenging scientific outcome from our universities and to compete China and small countries like Korea, Japan and Taiwan and other things, you require good number of experienced postdoctoral fellowship. The other important thing is that there is no permanent room for researchers in university system unless and until you are creating at least 40% system for the junior level, middle level and senior research fellows who will do nothing, but they will only do applied research. And for that, I think that the best model is Institute of Chemical Technology. Almost 80% of faculties of Institute of Chemical Technology, they are giving consultation and they are giving 5 times or 10 times more income than their own salary. Unless and until we are not building up such kind of system, I think that the whatever efforts we are making, it will not be fruitful to the expectation of our Prime Minister and in our policy makers of new education systems. And last point is that in the university system, there are very bad IPR law and rules for the consultations. Unless and until you are making a very good consultation and IPR rules, which will give entrepreneurs, innovators, and the young scientists and young researchers
some sort of encouragement by the financial benefit to them to some extent, I think that this will be a very good suggestion for our future generation, so that the skilled people can be trained in universities, they can earn very well in the system, they can be have a permanent place in the university system, and they can contribute to the GDP of the nation. I think that I have made my almost points. Anybody can see my own website, Anamik Kantilal Shah, and my contribution and scientific contribution for understanding and whatever the collaborative works we have done individually with the different pharma companies. There is no time for that, so I am not going into deep on each of the collaborative work so far we have done. But I think that the model which we have developed at Saurashtra University from 2000 to 2017, I think that somebody from the management and entrepreneurship area and what we call it innovators area, they should come together in the team and they should study this model. And this model, I am sure that it is replicable to the rest of the universities, whether it is a private university or state-funded university or it is the central university. Thank you, sir, for good opportunity. And I hope that I could convey exactly what this session wants to convey to the participants in India and abroad. Thank you all. Thank you. Thank you, Honorable Vice Chancellor Sahab. It was such a pleasure to hear Dr. Anamik Shah Sahab, the Honorable Vice Chancellor, Gujarat Vidyapeeth, that is in Ahmedabad. Next time, whenever you get an opportunity, I would request do visit this particular university. I had gone last time. I attended one of the session over there, one of the program over there, and I'm grateful to Honorable Vice Chancellor Sahab for the same. Before we'll go to Dr. Tulika Mehta, I've got another distinguished guest for this particular session, Professor Ajay Kumar Singh Ji, the Honorable Vice Chancellor, Sri Sri University in Odisha. He had been very kind to come on this platform earlier as well. A lot of inputs he has given to us. After getting the valuable inputs from Dr. Upendra Ji, from Dr. Anamik Shah Ji, now we move on to Professor Ajay Kumar Ji, and thereafter we'll go to Dr. Tulika. Now, Honorable Vice Chancellor Sahab, my concern and my deep concern is I would request you to kindly give me your valuable inputs, how to bridge these skill gaps and what could be the role of the university, particularly in creating entrepreneurship culture. With these words, Professor Ajay Kumar Singh. Namaste, good afternoon to all those who have joined from India. Good morning to Mr. Balbir Chaudhary Sahab and all those who have in the times, those who are in the time zone of the morning at this moment. Good evening to all those who are in different time zone. Warm welcome from the side of Sri Sri University to all of you on this program. I must congratulate Dr. Gulshan Sharma Ji, the Director General of International Chamber of Service Industries, who is doing great service in this field of education, skill development, and building the nation. And the other colleagues, Mr. Balbir Ji, Dr. Tulika Mehta Ji, Mr. Manoj, who have just joined, and my senior colleagues, Dr. Upendra Dhar Ji, Honorable Vice Chancellor of Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya from Indore, Dr. Anamik Shah Ji, Anamik Kantilal Shah Ji, the Honorable Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth Ahmedabad, who just spoke before me, and it is a delight to listen to both of you, sir, and the kind of deep insights that you have shared and the kind of experiences of doing good work, not only within ourselves in India, but also collaborating with those who have the kind of equipments and all that which we do not have. So kind of new insights that you have given, it doesn't matter whether you have resources or not, but if you learn to collaborate with people, then it is easy for you to make things happen.
like Professor Anil Kumar Gupta ji, who is the MD for Honeybee Network. He moves from village to identify who are the entrepreneurs, what kind of innovation they are doing, the frugal innovation terminology that has come up, just to solve the problems of people who are at different places, the real problems that they are facing, and they themselves are the innovators in that. So there are a lot of things to learn from people like our honorable panelists who have just shared with all of us their experiences. With your permission, Dr. Gulshan Sharma ji, may I share the screen? Sir, all rights are with you. All rights are with you, sir. But Yes. still I have to ask permission, from you that whether I can share or not. Can you see my screen now? Yeah, sure. But it has yet to come. It has yet to come. It has yet to come. Yes, Okay. it has come. Now you can see, no? Yes. Okay, great. So you wanted me to speak on skills gap and the role of university on promoting entrepreneurship. The skill gap is huge as per all the reports that we see, and the kind of estimate is 600 million in the next couple of years. Kindly increase the size. I hope I'm Just increase the size. Yeah. From down below or from? It's okay now? No. You come down. I have pressed the button for the full screen. I have pressed the button for full screen. Is it there full screen or not? नहीं जी नहीं, आप नीचे आ जाइए राइट साइड में. हाँ जी, यहाँ पर आ जाइए. यहाँ नहीं, जहां आपने अभी किया था ये यहाँ आ जाइए. वो मैंने किया था, ऊपर से भी किया था मैंने. I can stop sharing and do it one more time. हाँ जी. वो actually I can do it one more time. So people are watching on mobiles also, so they'll be able to see. So ladies and gentlemen. Yeah. So I pressed that. So I hope it will be now in the full screen mode. Yeah, I hope it is in the full screen now. Perfectly fine, ji. Please go ahead. So India's education system, ranks among the worst in the world when it comes to human capital contribution. And according to Data Labs, less than half of the tech workforce in India has employable skills. That means more than half does not have that. According to World Economic Forum report, by 2022, over half of all workers in India will require reskilling to meet the talent demands of the future. It also suggested that talent availability is the single most important factor in determining job locations for international businesses with operations in India. So gap is huge if you see these things here, and the companies which are going to adopt technologies, by proportion of companies likely to adopt by 2022, user and entity big data analytics 85% and so on and so forth. You see these figures are in front of you. App and web enabled markets, Internet of Things, machine learning, all these are above 70, cloud computing, these are all 72 and above, and digital trade 59 and like that. So we have been hearing about all these terms, but the survey says that these are going to become reality. Like suddenly due to COVID-19, online education and many other things became reality just by the announcement that nationwide lockdown is going to be there. So we need to be prepared for all these things, and skills are required to be enhanced. And this figure, if you see, projected 2022 strategies to address shifting skills needs by proportion of companies. So hire new permanent staff with skills relevant to new technologies is 84%. Look to automate the work is 81%. Retrain existing employees is 72%, and so on and so forth. Since the time is less, I'm not reading every one of these, but you imagine that how much is the requirement to skill people as per different surveys that we have shared. According to a report on global talent crunch by US-based management consulting firm Korn Ferry, an average of 42% of the core skills required to perform a job will change by 2022.
So we even don't know what kind of skills would be required in the future. So the desired skill set, as per this, what you are seeing on the screen now, innovation and creativity, 77% felt that it is very important for the future and in the work field. Critical thinking, problem solving, 76%. Adaptability and flexibility, like we all were adaptable to shift to online education. And in Sri University, we shifted in the weekend only. On Friday, it was announced 13th of March, and on Monday 16th, we were all online. Every class was happening online before nationwide lockdown was announced. Communication, 73%, leadership and people management, 72%. So I'm not reading all of these, but this gives you an idea about what is the skill set that is required in the future. It's not only about knowledge, it's about how you deal with things, how you are able to accept the challenges. So your sub-themes, what I saw were collaborative education, which my previous speaker has already talked about, that he has done successfully, Dr. Anamit Kandilal Shahji, and the kind of research he talked about. And he also mentioned about the need for postdoctoral initiatives to be funded and all that. Industrial exposure, incubation centers, CSR funds, government funding. So nowadays, the industry government diet is insufficient in realizing industrial innovation, and a university industry government triad is needed to address the needs of today's knowledge society. So we have also suggested to the government that you should have a nationwide portal wherein all these stakeholders are involved, so that whosoever requires whatever, the collaboration becomes easy. So many a times people don't know what all things are available. So we need to move to that, that platforms which allows us to have collaborative efforts, what Dr. Anamik Shah was talking about. So if we see university on the one hand and industry on the other hand, knowledge exchange takes place, participants from university, academic theory, innocent viewpoint, research orientation, participants from industry want practical, or they have practical know-how, profit loss, prudence, business orientation is there. So if you see, there is a temporary trading zone, risk-free and extraordinary, which happens, university industry coordinator making shared value and language to facilitate interaction. But we see there are less number of interactions between the industry and the university in terms of research funding and all those things, problem solving. There are very few institutions who are able to do it well. So it has to be enhanced to a larger level, and that duo will not work. We need to have all stakeholders involved. Second point that you mentioned was industrial exposure to the students, those who come to the university to get their degrees. So new national education policy talks about internships to a great extent. Corporate mentorship, alumni connect, and all these are also areas where we need to have deep insights. We need to work on these. We have a concept of Pansakha in Sri University. We say, one, you yourself, you need to do deep dive. So everybody is trained for doing meditation, Sudarshan Kriya and all that. And second is your senior batch student, third is your alumni, fourth is the person from the industry, and fifth is the faculty member. So these 5 people should help you to grow and develop and make you a good human being. Incubation center, I will give you an example of what we are doing in Sri University to inculcate the entrepreneurial culture among the students. Sri University has started a center for entrepreneurship and innovation, namely Sri Innovation. With all required infrastructure like computers, office room, multimedia equipment, LCD and discussion tables, we are organizing meetings and seminars with various industry officials and successful entrepreneurs. Sri University has a tie-up with National Innovation Foundation, a Vadwani group, to create awareness among the students on entrepreneurship. Also tied up with Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to offer their courses on corporate social responsibility and social entrepreneurship. You would be happy to know we have MBA entrepreneurship also, a program, full degree program approved by AICTE. So we provide pre-incubation support for the aspiring entrepreneurs through a club-based activity. We have a private limited company called SSU Innovation Private Limited, which is for budding entrepreneurs. And then ideation workshop on disrupt, scamper, brainstorming,
idea validation through DMA, PCA, 5Q framework, prototype design through MVP, product, lab connect support, etc. And then we take them forward. The success stories are also good number, like patent filing. There are 8 patents which have been filed through the startups, and there are 122 alumni who are having their own business. So we have a very good track record in the few years that Sri Sri University has been into existence from 2012. So in the period of 8 years itself, 122 with a database of 600 alumni, from which we could find out there could be more also. This is the data only from this. So there are some success stories in terms of startups like world's first moringa leaf-based tea. It is a company now, and it has been recognized also by government. Honorable Minister of Commerce and Industries, Mr. Suresh Prabhu, was present to see this. Then there are other success stories also. As I mentioned to you, that there are patents that have been filed by these people. One of them is this. First IoT-based honeybee cultivation in India, and there are other things which are mentioned here, which you can see. Incense sticks from Panchgavya, automated cow dung cleaner, and then biodegradable straw, room freshener from natural ingredients, and there are many others actually. So there are a lot of awards and recognitions at the state level also. Government of Odisha has also awarded. There are other awards that also we have got in terms of entrepreneurship. It is called as University of Startups also by some people. We have from skill development point of view and CSR funds, which is another title which you have. We are running Sri Sri Kaushal Vikas Kendra in the campus of the university, where people come and stay here, and they are trained, they are developed as per the contract that we have with Schneider Solar Electrician Training Center that they have funded. So it's a company corporate funded skill center where 900 plus trainees have been trained up till now. And we have L&T sponsored training center also that takes care of bar bending and other such skills which are required for the construction companies. So these are on campus where people come and stay, and their skills are developed. These are some of those pictures. Then we also have tied up with NALCO. It's a company, National Aluminium Company, and their foundation is giving the funds for providing trainings in leadership, women empowerment, agriculture, entrepreneurship, environment protection, among others. This aims at channelizing the energy of youth and women in a series of social engagements for the purpose of strengthening the efforts of rural development by focusing on the socio-cultural economic activities for the benefit of the tribal community. And these are in those districts. It's not in the campus of Sri Sri University. It's on the ground where the deprived people live. And so far as government initiatives are concerned, funding by AIM, Atal Innovation Mission, you have a separate session, I think, on this. So I will not devote much time on this. The major initiatives are Atal Tinkering Labs. And I recommend that every school should have Atal Tinkering Lab, Atal Incubation Center. I recommend every university and every institution of higher education should have these things. So there are these 7 major initiatives taken by Atal Innovation Mission. Since you have a separate session, I'm not going to details of that. To foster entrepreneurship and its skills, both formal education and novel theory and experiential learning in practical fields are needed. Academic theory gives us rational and logical ways of thinking about technologies and management, and experience tells us how they work in practice in real life. So holistic and heuristic ability to explore and asking questions such as why not and what if, abilities to create innovation that can act as basis for further development, so-called second order innovation. Learning what knowledge to gain and share on a continuous basis, spearheading socio-economic development, and learning how to support other players in entrepreneurial ecosystem. What Dr. Upendra Dhar was talking about, the 3 points that he mentioned, ecosystem was the 3rd point that he mentioned, is very important to achieve these transformational goals.
So UNESCO's framework for 21st century learning is in front of you. You can see that learning environments is important. Teaching, learning and assessment is one aspect of it. Leadership and culture of innovation needs to be embedded, and building capacity. All these are important for a learner to come for the innovation part of it. So this is the structured part of I hope you are there. Honorable Vice Chancellor Saab, I hope you are there. So ladies and gentlemen, that was a wonderful presentation from Professor Ajay Kumar Singh Ji, the Honorable Vice Chancellor, Shri Shri University, who joined us from Cuttack. We are thankful to him, and that was something wonderful by Professor Ajay Kumar Singh Ji. So I think somewhere the presentation got a little stuck. We lost his signal. Great. Mic is mute. Mic is mute. Yeah, I think the connection was lost for a while. Yes. Yes. You could hear me till the PPT was. Yes. Yes. And in fact, now the time has come. I convey my deep gratitude and thanks to the Golden Triangle, and particularly three visionary, three legends, and three honorary scholars of this country. Those have contributed so much to humanity, to civilization, to education. And now we are coming to skills and innovation. And then we are talking about entrepreneurship. So our deep thanks to Dr. Upinder Dhar sir, Dr. Anamik, our Kantilal Shahaji, and Professor Ajay Kumar Singh Ji. It was a great, great pleasure to have all of you with us. Thank you very much for sharing your vision. And I personally feel, अगर पहली सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी तक कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था और लोग एंटरप्रेन्योर थे और कोई भी कहीं किसी जगह पर कुछ मांगता नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, तो I think we can get back to that system once again. And what Upinder Dhar ji mentioned initially, कि हमको कहीं ना कहीं अवेयरनेस लानी पड़ेगी और इकोसिस्टम में बार बार बच्चों को ये बोलना पड़ेगा कि अब जॉब की बात मत करो, अब बेसिकली तुम एंटरप्रेन्योरशिप की बातचीत करो. और प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, आई वुड लाइक टू ऑफर यू, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, you have told me that there are 122 alumni startups. आप किसी दिन कुछ स्टार्टअप को इकट्ठा करना चाहें तो I would request Dr. Mahendra Nath Pandey ji and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of MSME to be with us on the platform, and that is the day we can just talk about and we can showcase some of the success stories which will become inspiration for others. And Honorable Dr. Anamik Kantilal Shah ji, एक बार वेबसाइट जरा दोबारा कर दीजिए, बता दीजिए अनम्यूट करके, because 3-4 queries have come to me कि उनकी वेबसाइट तो भाई हमें बता दो. मैंने कहा मैं बताता हूं जी, आपको पूछ के उनसे. तो आप एक बार वेबसाइट जरा दोबारा बोल दीजिएगा प्लीज. एक तो गुजरात विद्यापीठ की वेबसाइट आपको मिलेगी, तो गुजरात विद्यापीठ क्या कर रहा है उससे पता चलेगा. www.gujaratvidyapith.org. वो तो चल गया सर. दूसरा वाला, दूसरा जो है वो मेरा नाम पूरा लिखना है गूगल में, अनामिक कांतिलाल शाह. अच्छा जी, तो उसी से. हाँ, दूसरा जो है वो है इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट. ओके, www.iscbindia.com. ओके, ग्रेट ग्रेट. तो मेरा ख्याल श्याम शुक्ला जी भी आपके साथ मेंबर होंगे जो आज रात को आ रहे हैं 8 बजे अमेरिका से, बिकॉज ही इज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री. Right. He also must be part of it. So, ladies and gentlemen, that was a wonderful session by 3 honorable vice chancellors, and let us put our hands together for the patience of Balbir Chaudhary ji from Switzerland
and of course the smile of Dr. Tulika Mehta, and great patience, because you know when you get up so early in the morning in Switzerland, you can well imagine. आप बलबीर जी आपने एक कप चाय या कॉफी एक और लिया कि नहीं लिया? मैंने Because तीन एस्प्रेसो पी ली पहले। वेरी काइंड ऑफ, नहीं हमने बिल जो है इन तीनों वाइस चांसलर्स को भेजना है, बिकॉज वी हैव बिल टू ऑल द 3 वाइस चांसलर्स। Thank you, sir. No problem, sir, from me. Very Thank much. you. Kind of you, very kind of you. So thank you, sir. Now let me move on to the next session. And ladies and gentlemen, I invite Dr. Tulika Mehta from Kaizen, and she's going to introduce the entire team. And Dr. Tulika ma'am, you can take on the floor, and I request you now, you would like to kindly say a few words so that you will come as a speaker, Dr. Tulika Mehta ma'am from Kaizen. Yes, say a few words so that I get you at the center stage. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर तुलिका मेहता मैम, we can't hear you. Dr. Tulika ma'am, we can't hear you. No. Yes, now try. No, Dr. Tulika ma'am, we can't hear you. Then you can log in once again. I am going to then Balbir Chaudhary ji. I am going to him. But you wanted to introduce the subject first. You wanted to take on. This is your session. So still you can try. I can give you 30 seconds. कौन बनेगा करोड़पति? Take 30 seconds. Come on. चलिए आइए. Because now the dignitaries have already joined. We extend a very hearty welcome to all the dignitaries, those who have joined us now. And we are going ahead with the next session. And that is basically where we are focusing on IT, artificial intelligence, our different platforms, what we have got in technology, and a couple of other areas with regard to IT. So, Tulika ma'am, can you unmute your mic and can you come? Yes. Sir, am I audible on this? Yes, now you're audible, you're visible, 200%. Please go ahead. Right. Please go ahead. I can see a lot of civilization at the artificial intelligence at the back of yours. Okay, please, right over there, the screen. Go ahead. Wonderful. Thank you so much for inviting us to this session, and a very warm welcome to all the dignitaries and the distinguished guests. Ladies and gentlemen, here is Dr. Tulika Mehta. She is from Kaizen. She is the MD, and she has got with her engineer Bhagwat Gupta ji. We have got Honorable Balbir Chaudhary ji from Maugils from Switzerland. We have got Mr. Manoj Sharma, Just Happy Minds, and we have got Jitendra Jhangra, Wisdom of Minds. From Wisdom of Mind. Yes. So we have all these distinguished people with us from various other verticals. My topic for conversation today is that how we can earn through social media. Meanwhile, I'll work on the setup and I'll hand over to Dr. Balbir to briefly introduce himself and also talk about the latest technologies in the field of artificial intelligence. Over to Dr. Balbir. Wonderful. Namaskar from Switzerland. Pleasure to have you with us. Thank you very much for inviting me. So I was asked a day before to tell about some words about artificial intelligence. So today, I listened very carefully to all doctors and professors, and it was really very interesting. You know, for me, it is really interesting to know what is going on in India, and it's always a great pleasure to know, yes, we are going forward. And thank you so much.
I'm a person who learns every day, and I will learn till I will be 108 of age, maybe. So every day for me is a new day for learning. Now, may I share my screen, please? Please. Please. Yes. Company's name is, so I will also, okay, now it's working, Modguilds GmbH. It was launched in 2005, and I would like to show you what is required from companies in Switzerland, what they require, what kind of skills they require at the moment, and also in the future. And this is related to artificial intelligence. We don't have, the problem is we don't have many skilled personnel here in Europe. So East Europe is coming forward, but India can compete. And now we have seen also the Swiss government has, they have seen that India can do better than other countries, maybe China or East Europe. So we have a team in, our team is in Bangalore. There are data scientists, there are project managers, and there are other engineers. So the whole team is in Bangalore, and we would like to work with Kaizen in the future in the field of education. So now what is needed, it is automation in the sector of, in the field of automation. There are a lot of tools. One is from Automation Anywhere, and also help systems. And there are a lot of tools for the robotic process automation. So with that, we can automatize processes, services, and we can reduce cost, IT cost, with the help of robotic process automation. So at the moment, the cost of employees is too high. So every company is going to automatize their processes and services. Then we have customized AI products and software development for customized solutions. So we don't see that this is a pharma company. This is a company who build, real estates or machines or other things. So in every field we can use AI. For instance, we are doing research on blood values at the moment. So the results will come in maybe in 6 months. So there is needed image processing. First of all, machine learning, deep learning, image processing, natural language processing, voice recognition, like also face recognition. So these things we are dealing with. Then we have SME customers and as well as multinational. So we went to the customers. Then the requirement of SMEs was that why we would like to have one company who will serve us with all kind of IT needs. Then we have also started for them digitalization and digital presence. So now we are the only spoke, single point of contact for them. And that is what they can reach us, 24/7. Otherwise, they have one supplier for robotic process automation, one supplier for hardware, one supplier for social media work, and
other one is maybe search engine optimization, etc. Now they have really one supplier under one roof. So IT under one roof. Then we have also trainings. There is our website. The trainings are there. So if I may change my, I have to change to the web. So now these are our website. I will write in the messages. So it is training part is advanced topics on machine learning, artificial intelligence, then Python, then data science, and we have other trainings. I will come later on that. So I will give you the website. Then I will come to the messages. So now I have the full page for presentation. This is robotic process automation. This was the portfolio, and then now I will take this to the other side. Now, yes. So that we can see about robotic process automation. I don't want to go too deep into RPA, but I can send my presentation to you. Maybe you can provide this presentation to the viewers. And then all kind of software development. We have, as I said, offshore team, and they develop all kind of softwares with the help of AI. Then also in the field of digitalization, there is huge requirement for social media presentation, for automatized processes, and for advertisements. This is the future is going to get data. Data will be most important thing in the future. If you have data, then you have customers. So the main thing will be to collect data from everyone. I mean, in Switzerland, we have very strict law. We cannot collect data. Our hands are not free. But in some countries, they collect all the data, like our handy, you know, if we talk to someone, or if we visit a website, if we write message, so someone can collect data. So with this data, they can, you know, project advertisements to the customers. So data will be most important thing in the future. We do also cost-effective maintenance and support, also in Bangalore, and then monitoring. Then, because lack of knowledge, we do also root cause analysis of faults. Then what we do is proactive maintenance. We tell to the customer where his pain points are, they have to be resolved. Then, of course, remote support. And with the trainings, as I said, it's in the field of artificial intelligence. This is R, I didn't say R. Then TensorFlow, data science, data analytics, Internet of Things and applications. This is written more about what we do with the RPAs.
to produce reports and ordering, scheduling, tracking deliveries, generating invoices, leveling up the customer service, making email communication better. I mean, you can automate, you can filter emails, and you can make reports out of them. You can send these reports to anybody. You can upload or download, upload these emails to any database. And yes. Then this is our contact address. I will write down the website name. When I find this, okay. Sorry. It's visible. It's visible, Mr. Balbir. On the share screen, the website is already open. It's modgills.ch. Right? Yes, I would Yeah. like to. Yes, it's visible, but I am looking for the message button. But I will, as soon as I end my presentation, I will get to this chat of Zoom. Then I will share. Right. Do you have any questions? Let this session get over, then we will take questions together. Okay. Thank you, Mr. Balbir. And so I'm sorry for the inconvenience which was caused. And now me and my team, Mr. Bhagwat, we are sharing the same laptop. So let me start with the basic concept that how we can earn through, social media. Let me also share my screen. May I? Once this screen gets closed, ma'am, then only you can share. Yes. Right. Now you can go on your screen, ma'am. So it is earn while you learn with social media. So we have been. All the youngsters, those are joining this particular program from different places, this is the most important for you, and that is earn while you learn. Great. Go ahead, ma'am. So as we see that the economy is shifting, you have to legitimate and create various other sources of income. So this is one of the opportunities available wherein people can understand and earn money. If I talk about average time spent by an Indian on social media, it is being calculated that almost 2.5 hours of the day an Indian spends on social media. And when this much amount of time is being invested, then why not bring something out of it? I have heard one line which goes like, to get rich, you have to make money while you're asleep. So this is one of the methodologies wherein while you're asleep, you are making money. In the coming slides, we'll be talking about few of the YouTubers who are like 18 to 25 years of age, who have not completed their UGs, not even graduates, and still they are making money in huge numbers. So this makes us understand that on even the distinguished guests from Sri Sri University have also brought this thing very clear, that collaborative education and skill development are the future for tomorrow. These are the future. So this is one thing that we have to understand, that while we are making the use of social media, we are also making money parallelly. These are the people, these are the youngsters who are associated with social media, and these are the names in India, in the Indian market, social Indian market, I must say.
These young guys have made money through YouTube, Twitter, Instagram, and Facebook. If I talk about the first guy, Ajay Nagar. Ajay Nagar is one person who is 18 to 20 years of age. He went to his college. He did not found any interest. He spent 3-4 days. He came back. I'm in my any of my slides, I'm not promoting that going college is not good, or probably having your graduation degrees and post graduation degrees is no good. My only focus, or my only reason of discussing these people, whether it is Ajay Nagar, Amit, Bhuvan, or Ashish, it is this, that these are few of the other people from the world of social media who have made money through this. If I talk that yes, 2.5 hours of a day an Indian spends on social media, then I want to quote this thing, that why not make money while you are asleep? Why not make money while you are on social media? Why not make money while you are simply fiddling with your phones, or maybe any of the gadgets on which we being youngsters, I mean, even the younger generation than us also have spent money in like thousands, in lakhs these days on the products, or like phones and MacBooks, still just for fashion. To bring this fashion into a money making gadgets is the concept of sharing these slides. This is the slide which talks about the earnings of these four people which I have mentioned. These, and the platform is YouTube. I mean, this particular slide only shows that if I talk about Ajay Nagar is a YouTuber who's having a channel by the name Carrie Minanti. This is a channel on YouTube, and this young guy from India, he makes a monthly earning of approximately $350,000. So this is a huge number which people who are even postgraduates, or maybe earning, have experience of 5 to 10 years, even they face challenges to make this much money in 1 month. So if I am talking on these lines, I'm only encouraging the students that you are spending 2.5 hours or maybe 1.5 hour on social media, or 3 hours. You should make judicious use of the technology, whether it is WhatsApp, YouTube, Twitter, or Facebook. How are these platforms being used as tool by the younger generations, or maybe anybody across, apart from spreading the word? We have been hearing, or we have been understanding that this social media is a kind of media which is just to spread the word, or probably get the likes. How we have been understanding social media so far, that this is one platform which is being used, wherein we can put something, post something, we will get few hits, we will understand, I mean, people will see where are we located. Some will have the know abouts of ours, some will have our know abouts, or probably we will have some insight of what is going across the globe. Yes, I agree, this is an informational source, but how this informational source is brought into money, how are we able to channelize money from the website traffics? This is actually the social media. So if I talk about social media in a sentence, it goes like: social media marketing is the use of social media platforms to connect with your audience, to build your brand. Okay, you build your brand, you increase sales, you drive traffic, or maybe you make people aware, you engage people, you make followers, you spread the word, you run social media advertisement. This is social media. And how this social media is being channelized in YouTube, how it is being channelized in Facebook, how this can be channelized by students. In one of the sessions, probably few days back, we had a webinar here on the same platform held by ICISI Chamber. In that platform, what was being taught about, what was being discussed about, I must say, was like, is social media or is any platform, like, I mean, probably it is artificial intelligence, or maybe Zoom, or any other technology which is new, which people have, or which teachers have heard about,
or learned about or expressed about in COVID, is it taking away the teachers? I mean, is any of these things taking away? No. In the previous talk also, what I had talked was that if I talk or if anybody is talking about technology, technology is meant to teach. Technology is meant to make money. Technology is brought to benefit. Yes, everything will always have its pros and cons. We have to understand that how we have to put this particular technology into judicious use, and how we can move forward, and yes, how we can earn money from this. So again, I'll repeat, earn money while you are asleep. I find that yes, social media goes like this. You put some posting, you put something on streaming, you put games on streaming, those games keep streaming, you get huge traffic. Yes, the traffic is proportional to the money, and that money comes to your wallet. Why is social media important? If we talk about the positive aspects of social media, if we are today on such big platform talking about social media, why is it important? Small businesses, they are attracted towards social media. Even there had been times, I mean, when the Facebook ads or probably Google ads or YouTube ads was very raw, very new to the market, small business owners did not knew only. What we see, I mean, in the Indian market, what we see today, very small. I mean, you go to the rural areas, and there are small shops of say clothing. Let me take example of clothing. Those shopkeeper owners have also understood that how this social media will spread the word. What they do, they put it, they choose one day, they put their all products on live. They keep showcasing one by one. This is free. This is no Facebook is taking money for this. No YouTube is taking money for this. They have also understood that apart from fiddling, apart from posting likes and comments, how can they bring this technology of use into their own business? So this is also for small business people. It is very easily accessible. After Jio, it has become even more accessible because the internet had become at low cost. If we talk in numbers, 57.8% gain more business contacts. You make groups, you gain business contacts, you can easily spread your word directly, and yes, no matter you travel to that particular person or location, you are able to understand, and your business can move from A location to B. If I talk about market research, the market research has also taken a higher 42.4% upgradation with the social media. So we can precisely say that yes, social media is one particular thing which has brought the world closer. So this is a number of internet users. I mean, if we say about in 2012, it was like approximately 137 million, and today it has gone up to 730 million. The graph is rising, and it is likely to go above. Obviously, from 4G we'll be shifting to 5G, and we'll be understanding various more aspects. Today we are in the areas where we understand Wi-Fi, that is wireless fidelity. There has been a lot of research, and there has been a lot of understanding wherein the technology has moved from Wi-Fi to Li-Fi. I mean, from wireless fidelity to light fidelity. There is no requirement of wires to connect your internet or connect your social media. You can connect through lights. I mean, this is also, this research has been done, and this is also being executed in some parts of the globe about light fidelity. To wherever there is light, you have the bandwidth, and you can access your internets and access your social media platforms through light. So this graph makes us understand that if in India the number of users have upgraded from 137 likely to go to 829, and this graph is
going above and it will go above. So we should understand what is more powerful. Yes, social media has become more powerful. If anybody who was marketing on YouTube or probably on any of the platforms in 2012, which is, I mean, the ratio is very trivial because people were not aware only that particular time that yes, these particular platforms are also something who can make money. I mean, from which we can make money. Today, people have understood. So this we should understand in India, which is a country which is into a mode wherein people are learning. We are growing country, and there also people have understood the power of social media. That yes, from this particular and the four out of the many of the four people which I have named earlier who have made money like hell, they were from India only. So we have to understand that during the COVID pandemic conditions, the people who were aware of the fact that yes, money can be made through social media, money can be made through internet, money can be made through these particular platforms, they have not suffered. They have used this tool as a powerful tool to make money. They have understood that yes, technology when going hand in hand with this particular internet and social media platforms, it is a wonderful tool and we can make good amount of money. We know about various social media platforms, be it Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, and many more. I mean, these are the basic platforms which are mentioned here: LinkedIn, YouTube, Twitter. From this particular, I have given a basic overview that yes, how this particular technology has brought enough money in the segment, and yes, how traffic brings money. Now we should understand that yes, we can. I would love to say that yes, money making is a hobby. Money making is a. If I talk about internet, money making is purely a hobby, and this hobby, I'm sure, this hobby will complement any other hobbies very beautifully if you understand that how you can modify, play, create, follow, stream, all these terms. Now, going to the technical aspects of how to earn from Facebook, I would like to introduce a member from my team, that is Mr. Bhagwat, and he will be basically discussing about how you can create Facebook content, how you can use Twitter, how you can use Instagram. I have given the outline. He will, basically introduce all these platforms practically. Over to Bhagwat. Bhagwat, please come. Thank you. Hello, good afternoon, everyone. So today I'm talking about how to earn money from Facebook. तो सबसे पहले अपने बारे में बता देते हैं कि जब मैं सेकेंड ईयर में था, कॉलेज में था, मैं LPU से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उस टाइम सेकेंड ईयर में जो है अपना मैं पैसे अर्न करना चालू कर दिया था, जैसे कि लाइक ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से, ये फेसबुक पे कंटेंट डाल के मैं अपना एक पॉकेट खर्च निकाल रहा था, जिससे जो है गार्जियन को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं इस इस प्रेजेंटेशन से मैं जितने भी हमारे यंगस्टर है लाइक की जो सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, कि कोई स्कूल का कोई स्टूडेंट है, तो इस प्रेजेंटेशन से मैं आपको सबको बताऊंगा कि आप रियल वे में आप किस तरह से लाइक अर्न कर सकते हो एक्चुअल वे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, कि हम फेसबुक से किस तरह से लाइक पैसे हम अर्न कर सकते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक आता है सेलिंग अ प्रोडक्ट, सेकेंड आता है फेसबुक मार्केट प्लेस, थर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग, तो फोर्थ है एडवर्टाइज योर बिजनेस ऑन फेसबुक, क्रिएट अ फेसबुक कंटेंट, अर्न बाय सेलिंग फेसबुक लाइक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केट ऑन फेसबुक, अर्न फ्रॉम फेसबुक एड्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है सेलिंग अ प्रोडक्ट। आप यदि पैसे अर्न करना चाहते हो तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है लाइक वॉच है, हेडफोन है, यदि आप कोई प्रोडक्ट है, यदि आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हुआ, तो यदि आपके पास कोई नॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए कि कुकिंग का शौक रखता है या कोई किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग शौक रखता है कि मैं इस तरह से जो है लाइक एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा है कि किसी को टीच करना है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, तो मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, ई बुक बनाऊंगा
और ई बुक को जो है मैं सेल करूंगा या फेसबुक, जिस तरह से यहाँ पे वॉचेज है, जो आपके पास जो नॉलेज है उसको आप एज अ प्रोडक्ट के थ्रू जो है आप सेल कर सकते हो और उससे जो है अच्छा खासा जो है रेवेन्यू यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है फेसबुक मार्केट प्लेस। आप लोग जानते होंगे कि अमेजोन जो है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, ये जो है लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे जो है प्रोडक्ट सेल होता है। तो फेसबुक ने जो है कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस जो है लाइक इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आपके पास जो सामान आप यूज नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे कोई जीम वगैरह सर, या कोई टी शर्ट वगैरह सर, या कोई वॉचेस या कोई कार आप यूज नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप इजिली लाइक कि आप यहाँ पे जो है मार्केट प्लेस में आप डाल के जो है ना अपना प्रोडक्ट जो है इजिली यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसके थ्रू भी जो है आप लाइक पैसे अच्छा खासा जो है आप अर्निंग कर सकते हो फर्स्ट फेसबुक मार्केट प्लेस। थर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग। ये जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इनसे हम पैसे किस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मान लीजिए कि अभी जो काफी सारे जो ऐसे जो एफिलिएट मार्केटिंग जो क्या कहते हैं लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, अलीबाबा हो गया, शॉपिफाई हो गया, और बड़े बड़े ऐसे कंपनी है, गोडैडी हो गया, होस्टगेटर हो गया, बड़े बड़े ऐसे जो सॉफ्टवेयर से लेके ई कॉमर्स वेबसाइट है जो लाइक ऑफर करता है कि हमारे एफिलिएट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप इनरोल करो। अब जब भी मेरा कोई प्रोडक्ट आप सेल करोगे हमारे वेबसाइट से, पर्टिकुलर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट लाइक कि $100 का वो बिक रहा है, तो यदि हम उस प्रोडक्ट को यदि हम सेल करवाते हैं अपने लिंक के थ्रू या अपने वेबसाइट के थ्रू या अपने चैनल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, तो उसको भी जो यूजर परचेज करेगा उसको $100 ही में ही मिलेगा। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली 15 से लेके 20% तक जो यहाँ पे आपको लाइक कि आपको डायरेक्ट जो कमीशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। लाइक फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपिफाई, अलीबाबा, काफी सारे ऐसे जो है लाइक जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो क्या कहते हैं सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, लाइक वहां से आप इजिली जो है आप पैसे कमा सकते हो। यदि आपके पास फेसबुक का काफी अच्छा ऑडियंस है, लाइक आपके पास वेबसाइट है, यदि आपके पास क्या कहते हैं अच्छा खासा जो है आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, वहां पे आप स्वाइप अप डाल के जो अपने लिंक को जो है प्रमोट कर सकते हो और वहां से जो है काफी अच्छा जो है रेवेन्यू जो है आप जनरेट कर सकते हो मंथली। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक कि यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम है एफिलिएट मार्केटिंग का, जहाँ पे जो है टोटल अर्निंग जो है $94 है और यहाँ पे जो है 79 जो है शिफ्ट हुआ है और क्लिक जो है लाइक 1000 हुआ है। तो इस तरह से जो है लाइक आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से लाइक फ्लिपकार्ट में भी सेम है, लेकिन इसका जो रहता है कि यदि आप कोई उस लिंक पे कोई क्लिक किया, उसका जो अमेजोन और जो फ्लिपकार्ट का जो कुकीज होता है लाइक उस टाइम यदि आप कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो 24 आवर्स के अंदर, कोई भी यदि आप पर लिंक पे क्लिक कर दिया 24 आवर्स के अंडर में कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आपको जो है लाइक उसका 15 to 20% आपको उसका लाइक मिलेगा ही, रेवेन्यू आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा, भले किसी भी तरह का प्रोडक्ट वो परचेज करे। इसके बाद है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात कर ली। इसके बाद है एडवर्टाइज योर बिजनेस ऑन फेसबुक। यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपके पास कोई बिजनेस है लाइक कि उसको आप लाइक सेल करना चाहते हो, तो आप कैसे सेल कर सकते हो? आप ऐड लगा सकते हो फेसबुक पे। ठीक है, जिस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ ऐड किस तरह से मैं ऑलरेडी मैं ऐड लगाया हूँ, तो मैं आपको ऐड भी दिखा देता हूँ कि जैसे जैसे कि एचएनई जो हेल्थ केयर जो है क्या कहते हैं लाइक प्रोडक्ट वेबसाइट है या हेल्थ केयर से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऐड लगाया हूँ, तो ऑलरेडी जो इनका कैंपेन वगैरह सब जो है यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो फेसबुक ऐड के थ्रू, और यहाँ पे जो है आप रेवेन्यू जो है अच्छा खासा जो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो फेसबुक ऐड के थ्रू। इसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन फेसबुक। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? यदि आपके पास लाइक ऑडियंस है, यदि आपके पास ऑडियंस है, आपको जो है कोई भी कंपनी आपको लाइक ऑफर करेगा कि आप मेरे प्रोडक्ट को लाइक आप क्या कहते हैं शेयर करो। ठीक है, यदि आपके पास ऑडियंस जिस तरह का आपके पास ऑडियंस है उसी तरह की कंपनी जो आपको लाइक इन्फ्लुएंस करेगा कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल करो। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल में ये जो है तसीना जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से जो है लाइक इन्फ्लुएंसर बन के जो है प्रोडक्ट को जो है लाइक एडवर्टाइज कर रहा है फेसबुक पे। 6 है क्रिएट अ फेसबुक कंटेंट। जैसे कि मैम ने बताया, डॉक्टर मेहता मैम ने बताया आपको कि आप यूट्यूब के लिए आप किस तरह से क्या कंटेंट बना के आप पैसे अर्न कर सकते हो।
उसी तरह से आप फेसबुक में जो है अच्छा खासा जो है आप कंटेंट डाल के आप पैसे अर्न कर सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक खेल में इंटरेस्ट है, यदि आपको सिंगिंग का शौक है, यदि आप कॉमेडी का शौक है, यदि आप कोई स्किल के बारे में आप बात कर रहे हो या किसी को एजुकेट करना चाहते हो, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो सारे जो है सारे जितने भी क्लासेस है सारे ऑनलाइन हो रहा है, तो आप जो है लाइक कंटेंट क्रिएट करके आप जो है फेसबुक से अच्छा खासा जो है रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे अर्न बाय सेलिंग फेसबुक लाइक्स। यदि आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस है, पेज बना हुआ है, ग्रुप है, तो आप जो है लाइक आप किसी कोई नया पेज है तो उनको जो है लाइक्स सेल कर सकते हो। लाइक 1000 के बदले जो है आप 100 लाइक्स दे 1000 लाइक्स आप दे सकते हो। 4000 लाइक रुपीस के बदले जो है 5000 लाइक्स आप दे सकते हो। इस तरह से जो है आप जो है लाइक फेसबुक लाइक्स भी आप सेल कर सकते हो। थर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो अर्न फ्रॉम फेसबुक एड्स। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया कि क्रिएट अ फेसबुक कंटेंट, तो यहाँ पे जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक 12.3 मिलियन जो है व्यू है, जहाँ पे आपको जो है रेवेन्यू मिला है 44,000 जो है यहाँ पे रेवेन्यू मिला है। इस तरह से लाइक आप फेसबुक के थ्रू जो है पैसे आप अर्न कर सकते हो। केवल ऐसा ही प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे एक जो है नया प्लेटफॉर्म है जिसने लाइक फेसबुक ने लॉन्च किया है 2 साल पहले, जिसका नाम है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, यदि आप ऐप से रिलेटेड कोई आपके पास अच्छा आइडिया है, यदि आप जानते हो ऐप बनाना जानते हो, यदि आपके पास अच्छा आइडिया है, तो आप ऐप बना के लाइक फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जो है एक एड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक कोड देगा और अपने ऐप में इसको जो है ऐड लगा के आप उससे भी आप पैसे अर्न कर सकते हो काफी अच्छा खासा। ठीक है, इसके बाद है हाउ टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। आप एज अ इन्फ्लुएंसर कर सकते हो, क्या कहते हैं, किसी प्रोडक्ट को जो है जो आपके यूजर है इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एज अ बिकम एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को आप लाइक सेल कर सकते हो स्वाइप अप डाल के या स्टोरी डाल के, या आप अपने जो है लाइक जो क्या कहते हैं जो उसके जो प्रोफाइल होते हैं वहां पे भी आप लिंक इजीली आप डाल सकते हो। यदि आपके पास ऑडियंस है तो आप एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हो। कोई अपना जो लाइक जिस नीच का जो है लाइक आपका प्रोफाइल है उस नीच का आप प्रोडक्ट बनाइए और जो है अपने प्रोडक्ट को अभी आप सेल इजीली कर सकते हो बिकम एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, कि आप किस तरह से लाइक पैसे अर्न कर सकते हो यूट्यूब से। बिकम एज यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो आपका पता है कि जो आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हो, अभी जो नया पॉलिसी भी आ चुका है जहाँ पे आपको 4000 वॉचिंग टाइम चाहिए और 1000 जो है सब्सक्राइबर चाहिए। यहाँ पे सेल योर मर्चेंडाइज, यदि आपका कोई लाइक कोई आप क्या कहते हैं आपके पास कोई लोगो है जो पसंद करते हैं लोग, लाइक आप जो है कोई क्या कहते हैं कैरेक्टर है उसको आप सेल करना चाहते हैं, टी शर्ट पे, कप पे या किसी भी चीज पे आप लाइक परसेंटाइज आप सेल कर सकते हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं यूट्यूब पे। इसके बाद है थर्ड की क्रिएट स्पॉन्सर कंटेंट। आप वो भी यदि आप कंटेंट बनाते हो, आपके पास ऑडियंस है, तो आपके पास जो काफी सारे जो नीच के जो आपके कंटेंट है उस पे आप काफी सारे जो जो होते हैं क्या कहते हैं लाइक कंपनी होते हैं आपको ऑफर करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको स्पॉन्सर मैं करता हूँ, आप इसको जो है अपने ऑडियंस को बताओ उसके बारे में। ठीक है, गेट योर फैन टू पे यू डायरेक्टली। अभी जो है अभी 1 लाख जो 1 लाख जो है ना, जब सब्सक्राइबर हो जाता है तो वहाँ पे जो है कि ज्वाइनिंग बटन होता है जहाँ पे आप जो है उनके फैन उसके जो है मेंबर बन सकते हैं, यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आप लाइक सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है आपको कि लाइक उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो 1200 इस तरह से जो सब्सक्रिप्शन होता है, इस तरह से जो है आप इसको ज्वाइन करके वहां से भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है लाइक लाइसेंस योर कंटेंट, यदि आपके पास कोई म्यूजिक चैनल का कोई कंटेंट है जो उसको लाइसेंस भी आप दूसरे को कोई यूज कर दे तो आप लाइसेंस भी जो है आप इस तरह से बेच सकते हो। सेम है हाउ टू मेक मनी ऑन ट्विटर। आप स्पॉन्सर ट्वीट आप जो है ना आप के थ्रू जो है पैसे अर्न कर सकते हो। इसके बाद पेड पर ट्वीट है, आप किसी के बारे में कोई प्रोडक्ट है, आपके पास ऑडियंस है, तो पेड पर ट्वीट भी आप जो यहाँ पे आप ले सकते हो। एफिलिएट प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर सकते हो और जो है प्रमोट योर ऑन प्रोडक्ट, यदि आपके पास कोई खुद का प्रोडक्ट है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे जो है सबसे जो क्या कहते हैं अभी I think Dr. Tulika, we lost the guest. We should have him back because dignitaries are watching this particular program.
I would request you, Dr. Tulika, if you can get the guest back. Mr. Bhagwat, we lost your contact. Ladies and gentlemen, this is the complete thing which is coming from social media. Social media के जो different tools हैं, उन सब को लेकर हमारे youngsters को पता होना चाहिए, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के साथ, डिजिटल मैनेजमेंट के साथ और डिजिटल टूल्स के साथ डील करते हैं, उन बच्चों को बेसिक्स पता होनी चाहिए कि कौन सा वाले टूल से बेसिकली आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं. It's a wonderful input from Dr. Tulika Mehta's team, and that is something really, really good which is going on. So all of us, we should try and learn the best possible way what Dr. Tulika Mehta and her entire team is giving the inputs to us. So as a part of the 6th Global Education and Skills Summit 2020, we are moving ahead with Dr. Tulika Mehta's team, and they are giving us the valuable inputs, how the social media is to be utilized, how it is to be used. Basically, that part we have to take care of. So, Mr. Bhagwat, or is it Mr. Manoj? Yes, sir. Yes, sir. This is Manoj. This is Manoj Sharma. Yeah. Very good afternoon, sir. Please go ahead. मुझे लगता है मैडम शायद उनके पास सिग्नल का दिक्कत है, तो why don't I continue? Yeah, please go ahead. Okay, thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया, sir. Thank you very much. So, hello everyone. This is Manoj Sharma. I am a corporate trainer, personal development coach, and mindset architect. I help individuals identifying true purpose and goal in their life, and then finally build the processing, then hit the goals. अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे मैं ड्राइव कर रहा था, तो क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि 12 बजे के बाद शुरू होता, बट आई वाज ऑन द वे, तो मैडम कनेक्टेड नहीं है, सो मुझे लगा मुझे शुरू कर लेना चाहिए. सो आई होप मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है, सर, आप सभी तक आ रही है? Absolutely fine. Please Okay, thank you, sir. Thank you very much. So before I go ahead, मैं मोबाइल फोन से आपके साथ कनेक्टेड हूँ. स्लाइड्स नहीं है मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन मैं मेरी बातों से अगले 5 मिनट के अंदर आप तक मेरा जो मैसेज है उसको कन्वे करने की कोशिश करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, गुलशन शर्मा जी, डॉक्टर गुलशन शर्मा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अदर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स जो बीच में आए थे, जिन्होंने आज अपने विचार रखे, अपने व्यूज रखे, उन सभी का भी मैं थैंक यू करता हूँ, और वो सारे ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है जो हमें सुन रहे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक फिलॉसफी है जिसको मैं फॉलो करता हूं, और अगले 5 मिनट में मैं उसी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा. 136 कॉर्पोरेट्स है अक्रॉस इंडिया जिनको हम ट्रेन करते हैं, मैं और मेरी कंपनी ट्रेन करती है. आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ जस्ट हैप्पी माइंड्स. वी आर कॉर्पोरेट ट्रेनर. वी आर इनटू सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट. और हालांकि कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरी ज्यादातर ट्रेनिंग रहती है, तो एज सच मेरे पास स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है बहुत सारा चीजें ना हो, लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, और वो बहुत सारा हद तक मेरी फिलॉसफी से भी कनेक्टेड है. तुलिका मैम आ चुके हैं. मैम थैंक यू वेरी मच, आप आ गए हैं वापस. आप चले गए थे तो मुझे लगा मुझे तब तक शुरू कर लेना चाहिए. बड़ा अच्छा किया मनोज जी आपने. ओके जी, शुक्रिया जी. अब मुझे लगता है मेरा जो वीडियो है वो भी प्रॉपर्ली नजर आ रहा है. मे भी हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू हो. अगर मेरी आवाज में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बंद कर दूंगा ताकि पूरा बैंडविड्थ जो है ऑडियो के लिए स्पेयर हो जाए. एनीवे, ओके, एनीवे जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. सो माय डियर फ्रेंड्स एंड सर्स रिस्पेक्टेड, और जितने भी सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं, मेरा एक फिलॉसफी रहा है लाइफ का, और आप सबने उसके बारे में सुना भी है कि आपका जो बाहर की दुनिया होती है वो अंदर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन होता है. मेरा ये मानना है कि अगर आपकी जेब में मान के चलिए सेंटर फ्रेश पड़ी है, तो अगर आप किसी को कुछ बांटना भी चाहो, कभी कुछ देने का मन भी करे, तो सेंटर फ्रेश से ज्यादा दे नहीं पाएंगे. उसी तरह से अगर हमारी जेब में, मेरी जेब में अगर 100 रुपए के नोट हैं और मेरा कभी कुछ मन कर जाए किसी को बांटने का, देने का, तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ? वही जो मेरे पास है. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई चेंज कोई क्रिएट करना चाहते हैं, हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टुवर्ड दिस सोसाइटी, हमारे परिवार, हमारी फैमिली, तो सबसे पहले वो चीज हमारे पास खुद के पास होनी बहुत जरूरी है. और इसी फिलॉसफी को
आधार बनाते हुए मैंने मेरा खुद का करियर डेवलप किया। आई एम ए सेल्फ मेड ट्रेनर, मेरी खुद की कंपनी है जिसमें कुछ एक लोगों को रोजगार भी है और इसके आसपास ही सारा का सारा प्रोसेस बिल्ड किया है। सो स्पेसिफिकली आज मुझे लगता है जिस तरह की ऑडियंस यहाँ पे है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हूँ इस ऑडियंस से, हाँ इतना जरूर है कि जहां तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जाकर के मैं बताता हूँ तो उनको मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष को महान कैसे बनाए, हम अपना जो जीडीपी है उसको डबल कैसे लेकर के जाए, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट दैट, लेकिन ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि आज हम जो हैं, आज आप जो हैं उसको थोड़ा और बेहतर कैसे बनाए। और इसी सिलसिले में मैं अगले 5 मिनट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ, यानी कि एक ऐसी बात जिसके रिगार्डिंग मेरी ज्यादातर टॉक्स स्टूडेंट्स के साथ रहती है या उन लोगों को रहती है, 2.5 लाख लोगों को जिनको मैंने ट्रेन अब तक कर लिया है, तो उन लोगों को भी मेरा मुख्य विषय यही रहता है। वो क्या रहता है, एवरीबडी सो क्रेजी अबाउट सक्सेस। हम किसी को भी, मैं इतने सारे लोगों को मिलता हूँ, कॉर्पोरेट्स में हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, और उनमें से मैं ज्यादातर को देखता हूँ दे आर सो क्रेजी अबाउट सक्सेस, एवरीबडी वांट टू बी सक्सेसफुल। ओके, और यही चीज कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपना एमबीए पास आउट किया। पहले बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया, क्यों किया मुझे नहीं मालूम है, फिर एमबीए किया, वो भी क्यों किया फिर मुझे मालूम नहीं है। देन लेटर ऑन आई वेंट ऑन बिकमिंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। उसके बाद जाकर के जो बीच का ये प्रोसेस था, बीच का जो पीरियड था 4-5 साल का, बहुत कंफ्यूजिंग था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पैसों की भी जरूरत थी, नौकरी भी करनी थी, एक तरफ लगता था नौकरी नहीं भी करनी है। तो ये जो ट्रांजिशन था 5-7 साल का बीच में, इस बीच में आई वॉज लुकिंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आई रियली वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन ये सक्सेस होती क्या है, एक्चुअल में सक्सेस के मायने क्या होते हैं, सक्सेस को सही मायने में डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ये मैं जानने की कोशिश करता था, तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिले। लेकिन एक बुक अर्ल नाइटिंगेल की मैंने पढ़ी, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मुझे लगता है पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन सक्सेसफुल होने के बारे में, सक्सेस के बारे में उन्होंने कही है। डॉक्टर अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। और आप यकीन मानिएगा यही एक डेफिनेशन थी जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस डेफिनेशन को पढ़ के जो है मेरा सब कुछ मुझे क्लियरली नजर आना शुरू हो गया, मेरी जिंदगी बन गई, लेकिन मेरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मेरी एक जो मेरा करियर है आज की डेट में उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, उसका शुरुआत होना शुरू हो गया। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। लेकिन इस डेफिनेशन के पीछे इतनी गहनता क्या छुपी है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि एक व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। मुख्यतः 3 चीजें लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होती है, माइंडसेट, स्किल सेट एंड देन पर्पस। माइंडसेट, स्किल सेट एंड देन पर्पस। इशू क्या है, लोग सबसे पहले माइंडसेट की तरफ चले जाते हैं या सबसे पहले स्किल्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ। जरूरी नहीं है ये 1 हफ्ता 1 महीने के अंदर आइडेंटिफाई हो जाए, पता चल जाए। कभी कभी हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करने में साल तक लग जाए। कभी कभी होता है हम ग्रेजुएशन कर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, तब तक शायद हमें पता चल पाता है कि मेरा ट्रू पर्पस क्या है लाइफ में। और ज्यादातर वर्कशॉप्स या ज्यादातर ट्रेनिंग जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूं वो आर्ट ऑफ गोल सेटिंग के आसपास ही होती है, और उसी के बारे में ही मैं अगले कुछ 1 मिनट आप लोगों के साथ, आप सभी ऑडियंस के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश करना चाहता हूं। अगर हम अपने गोल्स को अगर हम बाइफरकेट करते हैं, गोल, पहली बात तो यह है कि लोग मकसद या गोल्स होते हैं उन्हें सेट ही नहीं करते हैं, लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ा इशू तो ये है। और अगर लक्ष्य निर्धारित करते भी हैं तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहूंगा। मुख्यतः 3 तरह के लक्ष्य होते हैं, जिसमें से एक लक्ष्य तो होता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस गोल, देन दूसरा गोल हमारे पास आता है फिर अल्टीमेट गोल या इसे हम एंड गोल्स भी कहते हैं, और एक और तीसरी तरह के गोल आते हैं जिसे हम प्रोसेस आउटकम भी कहते हैं, जिसे हम प्रोसेस बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। 3 तरह की चीजें होती हैं जिसे हम प्रोसेस गोल्स कहते हैं या मींस गोल्स कहते हैं, देन एंड गोल्स या अल्टीमेट गोल, देन देयर आर द प्रोसेस आउटकम, प्रोसेस बाय प्रोडक्ट्स। अब होता क्या है, ज्यादातर यंगस्टर्स को जिनसे मैं मिला हूं, जिनसे मेरी मुलाकात होती है, उनके जितने लक्ष्य होते हैं, जितने गोल्स होते हैं, वो पैसे को आधार बना करके सेट किए जाते हैं। जबकि जो मैंने अभी आपके साथ बात शेयर करी, इससे बिल्कुल साफ सा जाहिर होता है कि मनी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एन आउटकम, या इसको बाय प्रोडक्ट कहेंगे। पैसा हमेशा ही एक बाय प्रोडक्ट होता है। किस चीज का बाय प्रोडक्ट होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, बहुत निपुणता से एग्जीक्यूट करने का बाय प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोसेस को हम अपने एंड गोल को अचीव करने के लिए फॉलो करते हैं। सो दैट इज सो इंपॉर्टेंट। अब मेरा जो मैसेज है दोस्तों,
दोस्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो यही है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो काम आप कर रहे हैं वो इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, इट इज नेवर, ये कभी भी एंड गोल नहीं हो सकता है, प्रोसेस गोल नहीं हो सकता है, बल्कि ये आपका बाय प्रोडक्ट है। आप अगर ये चाहते हैं कि मुझे इतना सारा पैसा कमाना है या मुझे इस तरह की लग्जरीज को अफोर्ड करना है, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। किस चीज के बाय प्रोडक्ट्स हैं? वो प्रोसेस जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और यहीं से ही मैं आपको एक संदेश ये देना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला होता है वो ये होता है कि किस काम को आप करना चाहते हैं। कौन सा काम ऐसा है जो आपको जिसको आप दिल जान से करना चाहते हैं। कौन सी चीज ऐसी है जिसके प्रति आपकी चाहत है। कौन सा काम ऐसा है जिसके प्रति आप पैशनेट है। ऐसा काम अगर आपको किसी दिन मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी की सफलता की शुरुआत उस दिन से होती है, जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि वो कौन सा काम है, वो कौन सा कार्य है जिसके रिगार्डिंग मैं पैशनेट हूँ, जिसमें मुझे मजा आने वाला है। और वो जो काम है उस काम को करने का, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है, अगर आपने उस प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो वो जो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि मनी है, नेम, फेम, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके पास आने ही आने होते हैं। तब एक और आखिरी गोल रहता है जो मैंने पहले भी कहा था कि वो उसको कहते हैं अल्टीमेट गोल। मैं अगर पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं क्यों कमाना चाहता हूं? अगर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं तो मैं क्यों करना चाहता हूं? अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो मैं क्यों बनना चाहता हूं? व्हाई? जब ये व्हाई हम किसी सेंटेंस के पीछे लिख देते हैं तो हमें इसका जो आंसर मिलता है वो आंसर किसी प्रोडक्ट या किसी एक्यूमुलेशन के फॉर्म में नहीं मिलता है। वो आंसर हमेशा हमें फीलिंग्स के रूप में मिलता है, जिसे हम अल्टीमेट गोल कहते हैं। मुझे लगता है सभी लोगों का कुछ भी कार्य करने का, कुछ भी पाने का, कुछ भी होने का जो अल्टीमेट गोल है, जो अंत में वो चीजें चाहते हैं, दे रियली वांट टू बी हैप्पी, दैट्स इट। वो पीसफुल होना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप जिंदगी में एक ऐसा कार्य चुनते हैं जिस कार्य में आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन आप उसमें खुश नहीं है, उसमें आपको जो बाय प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको चीजें मिलनी है, पैसा तो मिल रहा है लेकिन आपका उसमें जो आपको अल्टीमेट गोल चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसमें पीस चाहिए, या उसमें फिर आपको अंत में जो आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी में या तो अपने कार्य से खुशी नहीं होते हैं, अपने कार्य से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, अंडर परफॉर्म करते हैं, पीछे छूट जाते हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो फिर कहीं कहीं जाकर के मैंने ये भी पाया है कि अलग अलग तरह के फिर वो ड्रग्स में या नशे के आदी होना शुरू हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं वापस उस डेफिनेशन पे आना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं आज का ये बात आपके साथ क्लोज करूंगा जो अर्ल नाइटिंगेल ने कही है। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। वर्दी आइडियल मींस दैट इज सो डैम इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कुछ ऐसा जो हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। सबका अलग अलग गोल हो सकता है, सबका अलग अलग पर्पस हो सकता है। एक और इश्यू इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, ज्यादातर यंगस्टर्स के जो दुनिया में कहते हैं ना, वो जो लोग कहते हैं ना कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये होना चाहते हैं, मैंने ये भी महसूस किया है कि उनके ज्यादातर लक्ष्य दुनिया को देखादारी में होते हैं। वो आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं और उनको लगता है कि अगर ये खुश है इस काम को करके, तो इस काम को करके मैं भी खुश हो जाऊंगा, और गलती से गलत प्लेटफॉर्म या गलत स्ट्रीम या गलत करियर को चूज कर लेते हैं। सो बहुत केयरफुली आपको चूज करना है अपना करियर, बहुत केयरफुली अपना चूज करना है आपको गोल, अपना मकसद। एक बार अगर आपके पास आपका गोल, लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, उसके बाद बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। ये भी आप लोगों ने महसूस किया होगा, बच्चों के पास जिसमें इंटरेस्ट है उसमें स्किल नहीं है, और जो स्किल है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। अगर लक्ष्य, पर्पस आइडेंटिफाई हो गया, तब हमें देखना होता है कि अगर इस पर्पस को मुझे मीट करना है तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। देन गो आउटसाइड, उन स्किल्स को देखिए, उन स्किल्स को ऑब्टेन करिए। अल्टीमेटली आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर जाते हैं। सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट। मेरे पास स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं है। मेरी ट्रेनिंग्स मिनिमम 1 दिन की रहती है, 5-5 दिन के वर्कशॉप होते हैं, लेकिन मुझे टाइम स्लॉट 5 मिनट का मिला, और मुझे लगता है तुलिका मैम, इस 5 मिनट में मैंने जो बातें आप मुझसे सुनना चाहते थे शायद मैंने आप तक पहुंचाई, या अपने बाकी सारे दोस्तों तक, क्या ऑडियंस तक पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच। आखिर में फिर से डॉक्टर गुलशन शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू तुलिका जी, आपको भी इस अपॉर्चुनिटी और इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बाय बाय। Tulika ma'am, we have got 5 minutes. If you can take Mr. Bhagwat, we can just. Yes, I would call Mr. Bhagwat because he is yet to explain us that how we can make money through WhatsApp. Because सारे यंगस्टर जितने भी जुड़े हुए हैं वो एकदम मैसेज आना शुरू हो गए, भाई कहाँ गए मिस्टर भागवत, बच्चों को पैसे चाहिए बस। जी जी जी। हाँ जी, सॉरी फॉर नेटवर्क जो है ब्रोक हो गया था। कोई बात नहीं, प्लीज गो अहेड। तो यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑन
Is the screen being shared? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए. Screen share. स्क्रीन शेयर एंड वॉल्यूम भी बढ़ाइए, वॉल्यूम. जी. Let me share the screen. Is the screen being shown? नहीं जी नहीं, नॉट एज येट. आपकी टीम के एक मेंबर और भी हैं, जितेंद्र जी. जी. हाँ, वो एक्चुअली मोटिवेशनल टॉक नहीं चाहिए इस समय बच्चों को, प्रैक्टिकल पार्ट. दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट सोशल मीडिया. Right. Cheers. Sir, visible? Doctor Sahab, is the screen visible now? हाँ जी, now it is visible. Now it is visible. So, how to make money on WhatsApp? कि WhatsApp के थ्रू हम किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं. यहाँ पे एक वॉइस सेंस जो है, क्लिक सेंस है, एक वेबसाइट है जहाँ पे लाइक कि कोई आपके पास क्या कहते हैं, कोई लिंक शेयर करते हैं आप, तो आपको जो है कुछ सेंस बनता है, $0.5 या $0.01, इस तरह से जो सेंस बनता है, ये उस पर क्लिक होता है. तो यहाँ से वॉइस सेंस के थ्रू भी जो है आप पैसे अर्न कर सकते हैं. जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट को जो है लाइक किसी को सजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें चेन टैप है. यदि वॉइस सेंस में यदि आप लिंक शेयर करते हैं, जैसे कि मैं लिंक शेयर किया आपको, आपने साइन अप किया, आपने दूसरे को साइन अप करने के लिए बोला, या वो काम उसमें जो है लाइक इस तरह से लाइक कि एक तरह से जो है ना टारगेट मिलता है कि यदि आपने 5 को साइन अप कर लिया या 5 को लाइक टास्क मिलता है, तो यदि आप वो कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो काफी सारा चेन टाइप बन जाता है, और इसमें जो है काफी अच्छा पैसा लाइफ टाइम तक यहाँ पे जो है वॉइस सेंस के थ्रू जो है अर्निंग कर सकते हो. शॉर्ट लिंक्स के भी थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो. काफी अच्छा जो शॉर्ट लिंक है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, वहां से आप शॉर्ट लिंक करके आप अर्निंग कर सकते हो. एफिलिएट लिंक्स जो है मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो अमेजोन का जो एफिलिएट लिंक रहता है, या फ्लिपकार्ट का, या किसी भी जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, उसका जो एफिलिएट लिंक रहता है, और 24 आवर्स तक उनका कुकीज रहता है. उसके अंडर यदि कोई भी कुछ भी बाय करता है तो आपको 15 से लेके 20% तक यहाँ पे आपको मिलेगा. यदि हम सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड है, ये हम सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे लाइक 50% तक यहाँ आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे लाइक उसका जो टाइम पीरियड रहता है लाइक 30 डेज 50 डेज लाइक उनका कुकीज सेव रहता है. उसके अंदर यदि आप कोई भी प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई परचेज करता है, या कोई भी आप जैसे मान लीजिए सपोज कि किसी को डोमेन बाय करना है या किसी को होस्टिंग लेना है, पड़ेगा. यदि वो खुद जो उस वेबसाइट से जाके लेगा तो उतना ही पड़ेगा, बट आपके थ्रू यदि कोई परचेज करेगा उसका 30 to 40% आपको डायरेक्टली कमीशन यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिलेगा. थ्रू व्हाट्सएप पे आप लिंक शेयर के आप पैसे अर्न कर सकते हो. ठीक है, मार्केट योर ऑन प्रोडक्ट और स्किल्स. ठीक है, यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसका जो है आप डायरेक्ट एडवर्टाइज कर सकते हो. ठीक है, बिकम अ व्हाट्सएप मार्केटर फॉर बिजनेस. आजकल जो है काफी ट्रेंड है व्हाट्सएप मार्केटर बिजनेस का, लाइक कि आपने देखा होगा कि ऑटो बुक लगा हुआ रहता है. जैसे कि मैसेज को हम मैसेज किए तो यहाँ पे जो ऑटो जो है मैसेज यहाँ पे आते रहता है. यहाँ पे इसका पे पर डाउनलोड है. यदि आप लाइक कोई आपके पास ऐप है, ठीक है, तो आप किसी ऐप को आपके पास ग्रुप है, तो यदि किसी भी ऐप को आप शेयर करते हो तो उसके बदले आप उनसे चार्जेस कर सकते हो डाउनलोड का. जैसे मान लीजिए हमने किसी से लिया कि 5000 मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा ऐप, आपको इतना चार्जेस लगेगा. आपके पास क्या कहते हैं यूजर है, आपके पास जो है ग्रुप है अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप उस लिंक को आप जो है शेयर करके उनसे आप पैसे ले सकते हो. ठीक है, जैसे कि काफी सारे जो आप यदि सर्च करते हो क्या कहते हैं गूगल पे कि लाइक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर ग्रुप, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपर ग्रुप ही मिलेगा. हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. जितने भी जो ग्रुप जिस टाइप का ग्रुप होता है आपको ज्वाइन करना है, या आपको खुद से क्रिएट करके उसको प्रमोट करना है, उसको ज्वाइन करवाना है, और इस तरह से लाइक जो है अपने डाउनलोड ऐप का डाउनलोड बना सकते हो, और जो है एज अ प्रोडक्ट भी आप लाइक सेल कर सकते हो. और यदि आपका खुद का कोई ब्लॉग है, यदि आप कंटेंट आप अच्छा लिखते हो, मैं उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ कि आप किस तरह से ब्लॉग बनाओगे, और ब्लॉग जो है आपका लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे.
बट यहाँ पे आपके पास ब्लॉग है, यहाँ पे जो है लाइक उस पे ट्रैफिक ले जा सकते हो, ट्रैफिक ले जाके यहाँ पे गूगल एडसेंस या एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। काफी चीजें हैं जहाँ पे आप ब्लॉग बना के जो है आप अर्न कर सकते हो, ट्रैफिक ले जाके जो है अर्न कर सकते हो। इसके बाद है रिफर फ्रेंड टू एप्स, सेम चीज है, किसी को आप रेफर कर सकते हैं और इसके बदले जो है पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू मेक मनी ऑन स्नैपचैट, सेल योर ऑन प्रोडक्ट, आप सेल कर सकते हो, ऑन प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। क्रिएट अ स्पॉन्सर कंटेंट, यदि आप लाइक स्पॉन्सर कंटेंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हो। गेट योर फैन टू पे योर डायरेक्टली, यदि आप क्या करते हैं अच्छा लाइक किसी को आप अच्छे नॉलेज देते हैं या कोई जो यूजर है जो आपको मतलब प्यार करते हैं, इस तरह से जो है आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको जो है एज कुछ पैसे भी जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ब्लॉग क्या होता है कि यदि आप जिस नीच में आपको इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैं क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था क्या कहते हैं जब कॉलेज टाइम में जब मेरा 2 इयर्स हो गया था, मैं स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था और मेरा काफी अच्छा जो है अर्निंग मंथली आ रहा था। तो यदि आपका इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में तो गो हेड, आप कुछ जो आपका इंटरेस्ट है लाइक कि मेरा जो है लाइक कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या किसी चीज के बारे में बताया कि ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है, जो कि जो हमारे यूजर है उसका नीड है। आप देख सकते हो अपने आसपास, देख सकते हो कि जो बंदा किस तरह का जो है लाइक सर्च करता है कि उसको हेल्प चाहिए कि हमको अमेजोन पे एफिलिएट तो क्या कहते हैं अकाउंट कैसे बनाना है, फ्लिपकार्ट पे कैसे बनाना है अकाउंट, या हम इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाएं। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप ब्लॉग लिखिए, उस पर ब्लॉग लिखने के बाद जो है लाइक वहां से गूगल एडसेंस के थ्रू आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, वहां पे बैकलिंक भी आप बेच सकते हैं, किसी से जो है लाइक किसी का पेज क्या कहते हैं प्रमोट कर सकते हैं, लाइक जो है एफिलिएट प्रोडक्ट भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। यदि बात करते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट तो यहाँ पे कई कई ऐसे जो एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, शॉर्ट मी लॉट जो है एक वेबसाइट है जो अक्षय अग्रवाल का है, ठीक है, काफी अच्छा वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसने गूगल एडसेंस नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, उस पर एड चल ही नहीं रहा है, और उसका रेवेन्यू जो है मंथली रेवेन्यू लाइक 1 करोड़ से ऊपर मंथली रेवेन्यू है फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक प्रोडक्ट लेना है, ये आपके लिए बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो गलत है, आप वो प्रोडक्ट हेल्पफुल है, जेन्युइन है, बट वो प्रोडक्ट को जो है लाइक वो प्रमोट कर रहा है और उनसे जो है डायरेक्टली सेल कर रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग जो है, जो मैं यहाँ पे इसमें जोर कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग हर किसी को भी करना चाहिए। यहाँ पे यदि आप करते हो लाइक स्टोरी डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, फेसबुक ग्रुप पे डालते हो, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा अर्निंग मिलेगा। ब्लॉग से अच्छा खासा जो है आप अर्निंग कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज है जो आप इस प्लेटफॉर्म से, वैसे तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इतना सारा जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ से लाइक आप लाइक अर्निंग कर सकते हो। ये थोड़ा सा शॉर्ट था बट मैं आप खुद से सर्च कर सकते हो, मैं आपको जस्ट आइडिया दिया कि आप इस तरह से जो है पैसे अर्न कर सकते हो। बट यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। बच्चे भागवत जी बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं आपके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है, आप बताओ तो सही हमें कि हम पैसे कहाँ से अर्न कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑल द वे फ्रॉम इम्फाल, ऑल द वे फ्रॉम अरुणाचल ईटानगर। जी 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 वो वेबसाइट के बारे में आपने जो बताया उनको बता दीजिए, वेबसाइट जरा आस्था बताइए क्या है। जी जी जरूर बताते हैं सर, 1 मिनट रुकिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ये रिंगू मामा है, शी इज आस्किंग कि ये बताइए वेबसाइट कौन सी बता रहे हैं। 1 मिनट सर। ये जो है एक तरह से जो shootmelot.com जो है, ये अक्षय अग्रवाल का वेबसाइट है। ये जो है लाइक कॉलेज टाइम से ये स्टार्ट किया था, अपना कॉलेज स्किप किया था, कॉलेज स्किप नहीं किया था, लाइक की कंपनी स्किप किया था, उसका जॉब लग गया था, बट इसने एज अ पैशन चुना। उनको लाइक कंटेंट राइटिंग का शौक था कि किसी को हेल्प करना है, किसी को हेल्प करना है कि कोई चीज जो सर्च करता है उनको लाइक कि आपने देखा होगा कोई चीज आप सर्च करते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता किसी को, तो उसने एक ब्लॉग बनाया और उस पर जो है सारी चीज उसने लिख डाला जो कि चाहिए हमको, ठीक है, जो जेन्युइन कंटेंट होता है उसने सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मेक मनी ब्लॉगिंग, आप किस तरह से आप पैसे अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे
गूगल एड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे चीज जो है यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉगिंग है, ये जो रेफर लिंक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो शो मी लॉट। इसके बाद है काफी चीजें जो है ब्लॉग के बारे में बताया। एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे देख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसे आप अर्न कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाइक 1000 व्यू का लाइक आपको $10 तक मिल सकता है। यदि आपका यूएस में वेबसाइट या लाइक कोई कीवर्ड रैंक हो रहा है, यूके में कोई कीवर्ड रैंक हो रहा है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा जो है रेवेन्यू आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे और दिखा देते हैं लाइक और यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि हमने बात किया एफिलिएट का, एफिलिएट मार्केटिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी गूगल एडसेंस का ऐड नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक जो है ब्लू होस्ट का, जब इस पे आप क्लिक करोगे तो ब्लू होस्ट पे ये जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा, और इस पे जो है लाइक उनको 60% से लेके जो है 60, यहाँ पे तो जो है सिर्फ 60% बता रहा है, प्लस 3 डोमेन आपको मिल रहा है, बट इसको 40 to 50% जो है डायरेक्ट इसको कमीशन मिल रहा है एज एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू होस्टिंग, यहाँ पे जो इसने लिंक डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइड ग्राउंड है, साइड ग्राउंड भी जो एक डोमेन लाइक डोमेन प्रोवाइडर और होस्टिंग प्रोवाइडर है, जहाँ पे जो है डायरेक्टली जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल, इसका जो है प्लान है, जो कि हमारे जो ब्लू होस्ट का जो बेसिक प्लान है 2.95 पर मंथ, इस तरह से जो है डॉलर जो है प्लान है होस्टिंग वगैरह सबका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी चीजें दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो, उनका ब्लॉग फॉलो कर सकते हो, यदि आपको अच्छा ब्रीक में नॉलेज चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो इसको। और यहाँ पे 14 डेज टू फ्री ट्रायल, $10 सारे जो है लाइक एफिलिएट प्रोग्राम को ये प्रोडक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको लाइक वेबसाइट कैसे बनाना है, यहाँ पे जो है ये भी आपको डायरेक्टली प्रमोट करेगा, बताएगा आपको, सॉरी, आपको जो है वेबसाइट बनाना भी आपको इजीली बताएगा कि वेबसाइट को रैंक कैसे करना है, पोस्टिंग, डिस्काउंट कूपन, काफी टूले है जो ये प्रमोट कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। जो है ना 5 to 10,000 जो है इस पे ब्लॉग्स है, तो यहाँ पे सारे जो है मैं दिखाने के लिए बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद है कि आप जो है लाइक मैं आपको एफिलिएट जो प्रोग्राम है, एफिलिएट फ्लिपकार्ट, ये जो है फ्लिपकार्ट का जो है एफिलिएट प्रोग्राम है, यहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं और यहाँ पे आप कमीशन जो है चेक कर सकते हैं, और इसको जो है ब्लॉग पे प्रमोट कर सकते हैं, या फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं लाइक कि और क्या इनकम सोर्स है, और भी हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा अभी जो बेसिक जो ट्रेंड चल रहा है एंड्रॉयड ऐप का चल रहा है, अभी उसमें कंपटीशन लेवल भी कम है, क्योंकि मेरे पास भी जो मतलब लाइक 10 to 20 ऐप है, मेरा भी है, तो उससे हम किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं, ऐप बना के हम किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म है, मैं बताया था फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, जो ने जिसने फेसबुक ने लॉन्च किया था 2 साल पहले किया था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और एक है गूगल का जो है एडमॉब, सब जानते होंगे, एडमॉब जो है गूगल का प्रोडक्ट है, जहाँ जो है लाइक ये जो है लाइक जो जितने भी ऐप है उस पर एडवर्टाइज चलाता है अपना एडमॉब। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एडमॉब मोबाइल मोनेटाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लाइक यहाँ पे आपको साइन इन करना है और यहाँ पे कोड मिलेगा, यहाँ से जो है लाइक कोड लेके अपने एप्लीकेशंस में लाइक बैनर ऐड, नेटिव ऐड, इंटरसियल ऐड, ठीक है, वीडियो ऐड, इस तरह से ऐड लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद भी जो है काफी सारे चीजें हैं, जो सर्वे हो गया, ठीक है, इससे भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लाइक की कंटेंट बनाना आता हो, लाइक कॉमेडी, लाइक फनी वीडियोस, लाइक कुकिंग शौक है, तो आप जो है डायरेक्टली फेसबुक पे आपको पेज बनाना है, ठीक है,
फेसबुक पे आपको डायरेक्टली जाके पेज बनाना है, और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। Dr. Tulika ma'am, we are really appreciating your this effort. Okay, so Thank you, thank sir. thank you, sir. And if you want, I mean, we can have another session which is exclusively on. ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी। नहीं, आप इनको 5-7 मिनट और दे दीजिए, कोई जी बात जी नहीं। जी जी ऑनरेबल मिनिस्टर्स डॉटर इज आल्सो वाचिंग। ओके सर, तो यहाँ पे पेजेस है, और यहाँ पे यहाँ पे आप क्रिएट पेज कर सकते हैं। आप जो नाम रखना चाहते हैं अपनी जो पेज का, ठीक है, आप नाम रख सकते हैं, और कंटेंट ऐड करके आप डायरेक्टली, आपको रेवेन्यू किस तरह से आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे कि मैं दिखाया था, इस तरह से आपको रेवेन्यू आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो व्यू जो है, पर व्यू जो है, एक 1000 पे इसको जो है 3.61 जो है डॉलर मिला है पर व्यू का। 12.3 मिलियन व्यू है, इस पे जो है 44 जो है के जो है इसको डॉलर मिला है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करते हैं, पेज बनाना है, अपना पेज का नाम रखना है जो भी आप रखना चाहते हैं। कुकिंग का शौक है, कॉमेडी का शौक है, फनी वीडियो बनाना है, ब्लॉगिंग बनाना है, या जैसे कि आपने देखा होगा 5 मिनट जो है ना, दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि 20 जो है ना 5 मिनट क्राफ्ट्स जो है, यदि कोई कोई गिफ्ट को कैसे पैक करते हैं, या क्या कहते हैं कि इजी वे में क्या कहते हैं, जो चीजें जो है जो डेली कॉमन लाइफ में हम यूज करते हैं उसको जो हैक बताता है कि आप किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट बना रहा है, इसका यदि मैं अप्रॉक्स बात करूं कि ए मंथली कितना कमाता होगा फेसबुक का, तो कि 20 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक जो है पैसे अर्न कर रहा है सिर्फ फेसबुक। हम फेसबुक का बात कर रहे हैं, यूट्यूब का बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये जो काफी अभी वर्ल्ड का बात करें तो ये जो टॉप 10 में 5 मिनट्स ऑफ क्राफ्ट जो है टॉप 10 या टॉप 20 में आता है यूट्यूब पे। यदि फेसबुक का बात करें तो ये टॉप 10 में आता होगा हमारे ख्याल से, इसके भी अंदर आता होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेज बना के आपको कुछ नहीं करना है, अपना कंटेंट शेयर करना है आपको, ठीक है। पेज बना सकते हैं, और यदि आपको पेज बनाना है, पेज बना के भी अर्न कर सकते हैं। और यदि आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बनाया, अभी मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ न्यूज ग्रुप कीवर्ड होगा एक तरह से, जो यूजर है सर्च करेंगे फेसबुक पे चंडीगढ़ न्यूज, तो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑटोमेटिक ग्रुप आ जाएगा, इसमें लोग ज्वाइन करेंगे। यदि आपका ग्रुप अच्छा खासा जो है क्या कहते हैं ग्रो हो रहा है, तो जो भी चंडीगढ़ का जो क्या कहते हैं कंपनी है, आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे कि मेरा एक पोस्ट डाल दो आप अपने ग्रुप में, और उसके बदले हमसे आप पैसे ले लो, ठीक है। आपने देखा होगा अभी जो है, मैं काफी सारे जो फेसबुक पे फैन पेजेज है, कि सचिन तेंदुलकर फैन पेज क्लब, ठीक है, अक्षय कुमार फैन क्लब, ठीक है। जितने भी फैन क्लब है, फेसबुक का भी बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे इसने ये कर रहा है कि जो क्या कहते हैं कंपनी है, उस कंपनी उनको प्रोडक्ट कह रहा है कि आप मेरा एक पोस्ट डाल दो, या कोई ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट है तो ब्यूटी का जैसे कि मान लीजिए कोई है क्या कहते हैं कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, मान लीजिए कि आलिया भट्ट फैन क्लब बनाया, ठीक है, बना के उसमें फ्लोर्स 1 और क्या कहते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो है फ्लोर्स उनका गेन हुआ, ग्रो हुआ उनका चैनल, ठीक है, उसका पेजेस ग्रो हुआ, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी ब्यूटी टाइप जितने भी जो है प्रोडक्ट है, जो बैग हो गए, लेडीज बैग हो गए, कि जो कॉस्मेटिक जो है जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सारे चीजें जो है यहाँ पे उसको ऑफर करते हैं कि आप मेरे एक स्टोरी डाल दो। आपने देखा होगा कई चीजें, जो इन्फ्लुएंसर है, जो किसी भी प्रोडक्ट इसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तो किसी प्रोडक्ट को एक स्टोरी डाल देता है। मैं खुद हूँ, मैं मतलब कि मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद दिया हूँ पैसे, एक स्टोरी डालने का 50 से लेके 80 के जो है यहाँ पे पैसे लेते हैं। यदि उनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख जब फॉलोअर्स है, उसने 50 to 80 की जो है चार्जेस करता है। इस तरह से आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं होता कि आपके पास 100 के फॉलोअर्स है, आप नहीं बन सकते हो। हाँ,
आपको सिर्फ जो आपके साथ ऑडियंस जुड़ा है उसको आपको प्रॉपर गाइड करना है, जिससे जो है उनसे जो है लाइक लिंक बिल्डअप हो सके कि आप जो चीज कहना चाहते हो वो समझ रहे हैं। तो जरूर आप कोई सजेस्ट करो, कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे या कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट कोई आप कंपनी आपको दे रहा है, तो जरूर जरूर जो है लाइक वो जो प्रोडक्ट परचेज करेगा वो, और इस तरह से जो है अर्निंग आप कर सकते हो। तो ये था मेरा लाइक छोटा सा, और यदि और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ है, बट जो मेरे से हो सका शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताने की कोशिश की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। Thank you very much, Mr. Bhagwat. In fact, deep regards and thanks to Dr. Tulika Mehta. This particular session has been brought to us by Kaizon, and this lady has done a remarkable work packaging the entire thing right from Switzerland, then coming to the practical part to the youngsters, and thereafter she has given on the affiliate marketing. Ma'am, do you have anybody else in your group, or how do we have to go by? First of all, thank you for appreciating our team. Bhagwat is a part of our team. He is a digital marketer with us on board working for Kaizen Systems and our client. And one demonstration which has just shared in the slides for HNE. HNE is also our client. They are based in, they are into Ayurveda products of health supplements. So we are marketing them. And this is all his efforts that he has prepared such kind of presentation, which is, very understandable for even for the younger students. So with this, it clearly says कि ये social media जो है ये आसमान है, और ये इतने बड़े आसमान से हम बहुत कुछ extract कर सकते हैं. Maximum. We have Mr. Jitendra waiting in the row. Mr. Jitendra Jangra is basically from a skill development team associated with us as a team. And जब सब लोग सोशल मीडिया यूज करके और सिस्टम्स यूज करके थक जाते हैं, तब अक्सर जितेंद्र जांगरा जी की जरूरत पड़ती है. ये पार्ट है विजडम ऑफ माइंड का, जो ये मेमोरी स्किल्स पे काम करते हैं बेसिकली. He'll short take 5 minutes and discuss about how you when you have used a lot of social media and earned while you were sleeping, and how you can give rest and regenerate yourself. Over to Mr. Jangra. Thank you, ma'am. Am I audible? Ji, sir. Yes. So I would like to share my screen first of all. Sorry, please give me a moment. No problems, no problem. Take your time. And our Tulika ma'am. Yes, sir. Now, after this, we will conclude. I think another 5 minutes we take with him. Around 2:30, if we can close it, that would be perfect. Right. That would be very kind of you. Right. Fine. Right. So, hi everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. God bless you. Please go ahead. Thank you. So, myself, Jitendra Kumar, and nowadays I'm serving as a scientist in Guru Jameshwar University of Science and Technology. And I'm working on how to enhance processing speed of human brain in terms of peace, we can say in concentration, focus, learning ability, memory retention, kind of. So the topic is maybe relevant or not, I don't know, ki how to earn money through social media. So पैसे कमाने के लिए हम क्यों कमाते हैं? Why to earn? Because we want peace of mind, happiness. कि हम जो रूटीन एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हमारे पास हो, और जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे कुछ सोशल वेलफेयर, कुछ समाज को हम दे पाए. तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीजों को करना चाहिए. तो पहले तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि इफ समवन हु वांट टू अर्न मनी, वी कैन से लॉट ऑफ मनी, तो उसमें पैसे के साथ साथ हम कुछ सामने वाले को दे भी पाए. For that purpose, we do have some Dr. Tulika ma'am, I don't know, we lost the signal, or where's the problem?
I think there's a network problem. Anyways, thank you, Mr. Jangra. We'll get back to you again. Thank you so much, and thank you, Dr. Gulshan, for creating such a big platform for our team, and we can discuss all these things practically on the Chambers board. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. And in fact, you would be so happy to know that all the dignitaries from the various state governments, we got the people from UP, we got the people from Jharkhand, we got the people from Madhya Pradesh, we got the people from Delhi, we got the people all the way from Imphal, Itanagar, couple of other places. And they are so happy with this particular session. Regarding Mr. Balbir Chaudhary, we will take further details from you, how to go by and all. Sure. But maximum hits and the details which have come is where people are requesting, particularly youngsters, that kindly request the lady to have a separate session with Mr. Bhagwat. Mr. Bhagwat. Thank you. So we will work out, we'll plan it out with you. So ladies and gentlemen, our deep regards and thanks to this wonderful, very dynamic lady from Kaizen. She's doing a remarkable job, and particularly for our youth empowerment, for our teacher empowerment. And now we know that during the COVID, children are having a lot of challenges. बच्चे अपने माता पिता से पॉकेट मनी भी नहीं मांग पा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की बातचीत हुई, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने, सब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की बातचीत की, हमने बच्चों की स्किल्स की बातचीत की. मेरे हिसाब से the children are so happy with the session of how to earn money from various social media, the items and the segments and whatever tools you have got. So with these words, our deep thanks to Dr. Tulika Mehta, and we look forward to meet you, ma'am, on some other platform. And one of these days, let's have a detailed about 4 to 5 hours, because that's what is the coming over here with Mr. Bhagwat. They say it was too quick to deal with the entire thing. But Mr. Bhagwat, people are so very happy because the takeaway today is because ये समझ आता है कि बच्चों को पैसे चाहिए. बच्चों नहीं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डॉक्टर तुलिका मैम के एफर्ट से आज कि बच्चों को आपने एक पॉजिटिव वे में पैसे के लिए बताया, आपने क्रिएटिव वे में. इससे क्या होगा, बच्चे की स्किल भी बढ़ेगी, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ेगी. बिकॉज इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी बजा रहे हैं, वो सिर्फ नौकरी बजा रहे हैं, उन्हें कुछ सीखने का शौक नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने का शौक नहीं है. और ऐसे लोग जो हैं कुछ वक्त के बाद ऑब्सोलीट हो जाएंगे. लेकिन ये जो यंगस्टर्स हैं जो कल, इट डजंट मेक ए डिफरेंस कि बच्चा 11वीं में है कि 12वीं में है कि ग्रेजुएशन कर रहा है कि क्या कर रहा है. जो बच्चे क्रिएटिव होंगे, डायनेमिक होंगे, वाइब्रेंट होंगे. अभी एक मेरे को उनका पहला नाम याद नहीं है, एक बच्ची आ रही हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रही हैं, और मेरा ख्याल अभी 12th के बच्चे, 10th के बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं. द कंप्लीट ग्रुप इज कमिंग. So thereby we appreciate the efforts of Dr. Tulika Mehta ma'am at such a short notice. She arranged such a wonderful program. और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 सभी बोल रहे हैं कि भागवत जी का प्रोग्राम जो है डॉक्टर तुलिका मैम को बोलो कि एक डिटेल में करवाया जाए. तो with these words we are grateful. Thank you very much. Let's have a digital lunch for half an hour. 3 o'clock, 3 o'clock we are taking you to ASEAN countries, and all the 10 countries of the ASEAN, Myanmar, Cambodia, Laos, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, and Brunei. And we want to do some programs with Dr. Tulika ma'am there as well, because she's a great support and she has got a very dynamic team. So thank you very much, ma'am. And thank you so much, sir. Thank you. एंड भागवत जी को सून आपको वापस लेकर आना पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है. भागवत जी इधर ही है. बच्चों को भागवत जी इज काइजन. बच्चों को डॉक्टर तुलिका मैम से सिर्फ पैसे चाहिए, मतलब दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड ओवर हियर. बट इट्स अ ग्रेट लर्निंग, बिकॉज पॉजिटिव वे बच्चे सीख जाएंगे हाउ टू अर्न पॉकेट